टाइप्स ऑफ वोल्टेज। कितने टाइप के वोल्टेज है? हाँ, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, एक्स्ट्रा वोल्टेज, अल्ट्रा वोल्टेज। हाँ सही है, वो है, बट वो टाइप नहीं है, वो रेंज है। ओके, व्हाट इज द टाइप ऑफ वोल्टेज? टू टाइप्स, सिंगल फेज वोल्टेज, थ्री फेज वोल्टेज। लिखिए फर्स्ट वन, सिंगल फेज वोल्टेज। फर्स्ट राइट डाउन, सिंगल फेज वोल्टेज। सिंगल फेज वोल्टेज, another write down, the voltage across, the voltage across voltage across a phase and neutral, a voltage across a phase and neutral called as single phase voltage, called as single phase voltage, comma, phase to neutral voltage, single phase voltage, comma, phase to neutral voltage, comma, line to ground voltage, line to ground voltage, or simply as a phase voltage, or simply as a phase voltage, or simply as a phase voltage, full stop. Second write down, three phase voltage, phase simply as a phase voltage। सेकंड में लिखे थ्री फेज वोल्टेज, three phase voltage, another type, the voltage across face to face terminal, the voltage across face to face terminal called as three phase voltage, comma, face to face voltage, comma, line to line voltage, or simply as a line voltage, or simply as a line voltage, फुल स्टॉप। क्या मतलब इसका? अब ये लाइट को मुझे पावर देना है, तो कैसा कनेक्शन देते हैं? तो एक फेज वायर रहता है और एक न्यूट्रल वायर रहता है, ये तो इतना बेसिक तो सबको है पता। फैन को भी चलाना है तो क्या, एक फेज रहता है और एक न्यूट्रल रहता है। एसी को भी चलाना है तो एक फेज और एक न्यूट्रल रहता है ना। तो ये दो केबल्स रहते हैं। बट अगर थ्री फेज लोड रहा तो, जैसे थ्री फेज मोटर रहते हैं, या थ्री फेज के लिए आपको AHU आता है ना, तो उसमें जो केबल जाएगा वो तीन केबल जाएगा और तीनों फेज रहेगा, हॉट वायर रहता है। हॉट बोले तो गर्म नहीं, मतलब लाइव वायर रहता है वो। ठीक है, मतलब टच करे तो कुछ फील होता, तो तीन वायर जाता है उसमें, तो थ्री फेज होगा। ठीक है, और फेज तो उसमें फेज टू फेज का वोल्टेज चेक करे तो कितना आता है? वो थ्री फेज वोल्टेज। और फेज, एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में चेक करे तो क्या आता है वोल्टेज? वो सिंगल फेज वोल्टेज। वेरी सिंपल, एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज क्या आएगा? वो सिंगल फेज। और दो फेज का, टू फेज का चेक करे तो क्या आएगा? वो थ्री फेज वोल्टेज। इतना तो याद रहेगा ना। अगर मेरे पास थ्री फेज वोल्टेज पता है तो सिंगल फेज वोल्टेज कितना होगा, इसके लिए फॉर्मूला है, अपन बचपन में पढ़े थे क्लास 8 में, दैट V line is equal to √3 of V face। एनसीईआरटी के बुक में ये दिया हुआ था। ठीक है, V फेज इज इक्वल टू √3 ऑफ V, सॉरी V लाइन इज इक्वल टू √3 ऑफ V फेज। तो अगर मुझे यहाँ से V फेज निकालना है तो लाइन वोल्टेज अपॉन √3। जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ इसका, तो जहाँ पे VL क्या है? ये लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज का मतलब क्या होता है?
अभी लिखे देखिए लाइन वोल्टेज, लास्ट पॉइंट में देखिए क्या लिखे, लाइन वोल्टेज का मतलब थ्री फेज वोल्टेज, और फेज वोल्टेज का मतलब क्या होता है? फेज वोल्टेज का मतलब होता है सिंगल फेज। इसको समझना इसलिए जरूरी है, तभी रिविट समझ में आएगा, कनेक्शन उसके। ठीक है, तो सिंगल फेज वोल्टेज है ये। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, सपोज कीजिए अपने को ट्रांसफार्मर से जो पावर आ रही कितने पे आता है, वो थ्री फेज, अपन बोलते 440 का वोल्ट लग रहा है ना, 440, एक्चुअली वो आता कितना, 415 आता। कितना सप्लाई होता है वो, 415 आता। तो मान लीजिए ट्रांसफार्मर से जो वोल्टेज आ रहा है दैट इज अ लाइन वोल्टेज, थ्री फेज वोल्टेज कितना है वो, 415 वोल्ट। तो मुझे भाई ये बताना है कि फेज वोल्टेज कितना होगा इसका, बताइए आंसर। अच्छा, देखने के बाद आंसर कभी नहीं आएगा, ये मुझे पूरे पता है। उसके लिए आपको कैलकुलेटर निकालना होगा, वैल्यू पुट करके आंसर बताना होगा कितना। तो कैसा, तो वी फेज इज इक्वल टू वी लाइन अपॉन √3। तो वी लाइन इज व्हाट, 415 अपॉन व्हाट, √3, कितना था ये, 239.6, राउंड अप कर सकते हैं 240। तो अगर थ्री फेज 415 है तो सिंगल फेज क्या होगा इसका, 240। मतलब एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज चेक करेंगे तो क्या आएगा, 240। इसलिए अपन 240 वोल्ट यूज करते, लाइट फैन एसी वगैरह चलाने के लिए। ओके, फेस टू फेस का अगर चेक करें तो कितना वोल्टेज आएगा, वो 415 वोल्ट आएगा। ठीक है ना, लिख लीजिए। थ्री फेज आता है। अभी रूरल एरिया में हर जगह थ्री फेज ही है। वो सिंगल फेज वो आप 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, 20 ईयर्स पहले की, 10 ईयर्स पहले की। नहीं, अभी हर जगह आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थ्री फेज है, एवरीवेयर। अच्छा, दो ही चाह रहा है, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा इंटीरियर एरिया होगा तब। तो टू वायर का मतलब तो सिंगल फेज ही आ रहा है इसका मतलब। हाँ, अभी जो एक्सटेंशन प्रोजेक्ट में सिंगल फेज में गया हुआ है, जैसे कहीं पे आज तक कभी नहीं, आज़ादी के बाद से आज तक कभी नहीं आई पावर, तो वहाँ पे जो है वो क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन में सिंगल फेज लेके गया हुआ है। तो आने वाले वक्तों में लेकिन हो जाता है वो थ्री फेज। ये समझना पड़ेगा आपको, ये एटलीस्ट समझिए, तभी आपको रेविट समझ में आएगा, मजा आएगा। नहीं तो फिर उसके बाद फिर वीडियो चलेगा सिर्फ। थ्री फेज बस, थ्री थ्री फेज और सिंगल फेज। टू फेज आती थी बिफोर 1980, उसको बंद कर दिया, थ्री फेज ला लिए। क्योंकि टू फेज में लॉसेस ज़्यादा हो जाता, √2 लगाने के बाद लॉसेस ज़्यादा आ रहे थे इसमें, आउटपुट कम आ रहा था। बस। तो 1980 से पहले टू फेज की मोटर आती थी, तो अब नहीं आ रही, थ्री फेज मोटर नहीं तो सिंगल फेज मोटर। इट्स ओवर नाउ। नेक्स्ट, गिव द सब हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आपने कहीं पे देखा होगा लिखा हुआ इस तरह, 11 kV बाय सॉरी 333 kV बाय 11 kV डेंजर। आपने कहीं पे साइन बोर्ड देखा होगा इस तरह का कुछ,
ये 33 kV सब स्टेशन, या कहीं पे ऐसा देखा होगा कुछ टैग की रहती 33/11 kV, 132 बाई, अब जैसे रेती बोली है ना, वहां पे आप जाएंगे तो लिखा होगा 132/33 kV। ओके। कहाँ पे? नाला नगर चौरस्ते के पास सब स्टेशन है। तो उसके बोर्ड पे देखेंगे लिखा होगा 132/11 kV, आई थिंक सो। तो इसका मतलब ये होता, उस सब स्टेशन को कहीं से ट्रांसमिशन लाइन से जो पावर आ रही वो कितने पे आ रहा, 132 kV पे आ रहा। और वो सब स्टेशन क्या कर रहा, उसको स्टेप डाउन करके कितने पे बना रहा, वो 11 kV बना रहा। क्योंकि अपने का बिल्डिंग जो ट्रांसफार्मर है ना, इसकी इनपुट जो पावर आती वो 11 kV पे आता। और ट्रांसफार्मर के बाद जो आता अपने को आता वो कितने पे आता, 415 पे। ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को समझना जरूरी है। फर्स्ट, सब स्टेशन के अंदर एक ट्रांसफार्मर होते, एक या बहुत सारे रहते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के दो साइड्स रहते हैं, इनपुट और आउटपुट। इनपुट साइड को बोलते हैं प्राइमरी, और आउटपुट साइड को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। ओके। तो सब स्टेशन अगर लिखा हुआ इस तरह के, इट इज अ 33/11 kV, इसका मतलब ये हुआ, इसको ट्रांसमिशन लाइन से कहीं से पावर ग्रिड से पावर आ रही कितने पे, 33 kV पे, और इसने इसको स्टेप डाउन करा, वोल्टेज को कितना, 11 kV। दैट इज मीनिंग। ठीक है, इसका ये मतलब हो गया। सेकेंड, बिल्डिंग के लिए जो ट्रांसफार्मर रहते, उसे पावर कितना चाहिए, 415 वोल्ट पे। और इससे ट्रांसफार्मर को पावर कितने पे आती, मतलब यही 11 kV जो वायर है ना, सब स्टेशन से आपके बिल्डिंग के ट्रांसफार्मर को कनेक्ट होता है। कितने पे, 11 kV पे। और आउटपुट वोल्टेज कितना चाहिए, 415 वोल्ट। तो 415 वोल्ट को अपन 0.415 kV लिख सकते हैं, किलो वोल्ट। तो अगर मुझे इसका डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है तो कैसा लिखेंगे, इसका अगर डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है इस तरीके से तो कैसा लिखते हैं, सिंपल 11/0.415 kV। बस हो गया। नाउ, जब ये केबल 415 का बिल्डिंग के अंदर आएगा, तो क्या ट्रांसफार्मर से केबल डायरेक्ट लाइट को आ जाता, तो क्या क्या रहता है अपने को, देखिए बड़ी बड़ी पैनल्स रहते हैं लगी हुई। उसके बेसमेंट में देखेंगे बिल्डिंग में इस तरह के पैनल्स रहते हैं। इट इज कॉल्ड एज व्हाट, मेन पैनल बोर्ड। यहाँ से क्या होता है, ईच फ्लोर को डिस्ट्रीब्यूट होता। ओके। तो मेन पैनल में मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड या मेन पैनल बोर्ड बोल सकते हैं अपन। यहाँ से क्या जाता है, ईच फ्लोर पे एक मेन पैनल लगे रहते हैं। आपने देखा होगा ईच फ्लोर पे अगर नंबर ऑफ फ्लैट ज्यादा है एक फ्लोर पे, तो एक मेन बॉक्स रहता है आपको। और हर फ्लैट के लिए क्या रहता है, इंडिविजुअल बॉक्स रहता है, पैनल बोर्ड्स। तो इंडिविजुअल जो बॉक्स रहता है, शायद आपने देखा होगा इस तरह की रहती है आपको। इंडिविजुअल जो बॉक्स रहते हैं कुछ इस तरह की रहती है आपको, पैनल बोर्ड्स, है ना। तो फ्लैट्स को ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, या शॉप्स के लिए इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। इसे पावर कहाँ आता, तो उस फ्लोर के मेन पैनल से आता है, जिसको बोलते हैं सब मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। सभी फ्लोर के जो सब मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, मेन जो पैनल है हर फ्लोर का, उन लोग को पावर कहाँ से आएगा, फ्रॉम द मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो आपको बेसमेंट या सिलर में रहता है। इसे पावर कहाँ से आएगा, फ्रॉम द ट्रांसफार्मर। ठीक है ना, समझ रहे बात को ना। तो इस पैनल पे जो फ्लैट्स या शॉप पे जो पैनल बोर्ड लगे हुए हैं, इस पे जो इनपुट आएगा वो 3 फेज आएगा। ओके। तो अगर मैं 3 फेज वायर आ रही, ठीक है, इसमें से मैं एक ही फेज लूं और एक न्यूट्रल लेकर कनेक्ट कर दूं, तो कितना वोल्टेज आएगा, सिंगल फेज आ जाएगा। और तीनों को मैं एक पॉइंट में कनेक्ट करूं तो क्या होगा, वो 3 फेज हो जाएगा वो। ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई स्टेप डाउन स्टेप अप करने के लिए ट्रांसफार्मर नहीं चाहिए, क्योंकि नेचुरल है,
कि एक फेज और एक न्यूट्रल लिया तो सिंगल फेज हो जाएगा, और दो फेज ले लिया तो वो फेज हो जाएगा। तो सेम चीज यहाँ पे, सपोज इन दैट पैनल बोर्ड, एनी पैनल बोर्ड, शॉर्टकट लिख रहा हूँ मैं पीबी। पैनल बोर्ड को जो पावर आ रही वो कितना आ रहा, 3 फेज 415 वोल्ट। पैनल के बाद जो वोल्टेज आ रही, ये दो हो सकते हैं। ये 3 फेज रहा तो क्या हो जाएगा, 415 वोल्ट। अगर सिंगल फेज रहा तो क्या होगा वो, तो आ रहा समझ में बात। मुझे अगर लाइट को कनेक्ट करना है तो एक फेज और एक न्यूट्रल लेके जाना होगा तो 240 आएगा। अगर 3 फेज मोटर को कनेक्ट करना है तो तीनों फेज लेके जाना होगा। ठीक है। तो अगर तो इसकी कनेक्शन ये कहाँ से आ रहा है आपको, तो आपके ट्रांसफॉर्मर से आ रहे, इसे जा रहा है वो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को जा रहा है आपका। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन मुझे अगर लिखनी है तो कैसा लिखेंगे, हाँ, 415/240, क्योंकि दोनों वोल्टेज है ना तो इसीलिए 415/240 वोल्ट। आसान है समझना इसको, चलिए देखिए। 415/415 भी हो सकता है, यस बिल्कुल हो सकता है वो। अगर मुझे सपोज कीजिए एक पैनल बोर्ड है जिसमें सिर्फ 3 फेज मोटर कनेक्ट हो रहा है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 415/415, यस करेक्ट। हाँ, एलवी का मतलब होता है लो वोल्टेज रूम, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल पैनल्स रखे रहते हैं आपको। ये एसएमडीबी, तो एमडीबी जो है वो आपको एचवी में आ जाएगा वो। हाँ, तो बिल्डिंग के लिए है अगर थोड़ी भी तो वो आपको एलवी में आ जाएगा, लो वोल्टेज रूम। जी। ड्रॉ कीजिए। So is it is better, Hashim, when you come to when you are attending the class, just let me know, okay? Because I was thinking you are not present, so that's why I was speaking in Hindi only. No problem. I can Okay. understand. No problem. नहीं, लॉस तो होगा बट रिक्वायरमेंट ही छोड़ क्या करेंगे। अब अगर वैसा देखे तो when we are producing the electricity at the power station, it is nearly 2 lakh volt, 2 lakh 32 333 volt. So that will be get a step down. Okay. नहीं, it's second one is transformer, yes, your building transformer. Yeah, this transformer is a building transformer. ये सब स्टेशन के अंदर का है ये ट्रांसफार्मर। A PB can be any MDB, SMDB, DB. They all will get the what input as a what 3 phase 415 volt. Voltage role is what, to push the current.
So at what speed, or you can say how forcefully you want to push, so that depends upon your applications. So from substation, you are putting the power to the what 11 kV. So if see the power is constant, power supply is constant. So power is equal to voltage into current. So if you are increasing the voltage, current will be get what? Decrease. Power is constant. If you are increasing the voltage, current will get reduced. So that's why you can look that before the transformer, when that overhead cable is coming, how much size? 6 square mm. जो एल्युमिनियम की जो केबल रहती कितने साइज का रहता 6 square mm का 10 square mm का बट आफ्टर ट्रांसफॉर्मर कैन यू ऑब्जर्व देयर इज अ वेरी बिग केबल है ना ट्रांसफॉर्मर के बाद देखिए केबल जो रहती है वो बहुत ज्यादा साइज का रहता है ऐसा कैसे तो रीजन इज योर एप्लीकेशन इज व्हाट एट 415 volt so from 11 kV means from 11,000 volt you are decreasing it to what 415 volts it means if the voltage gets down the power will get up and means that current will get up here the cable sizing depends upon your what current so that's why cable size is getting increased at that input side the voltage is high but your current is less that's why cable size is less okay it's okay now next give the heading voltage rating voltage rating voltage ratings in our country even in Qatar and nowadays in KSA also that line to line what is the meaning of line to line voltage three-phase voltage that's line to line voltage is also called as what phase to phase voltage that means what as a three-phase voltage we are using how much 415 volt line to ground means what single phase or it is also called as what phase to neutral actually this word this line to ground is used as per the US standard and this phase to neutral word is used as per the what UK standard okay so phase to what neutral it was as a single phase how much 240 volt when going for Dubai even in UK they're having line to line or phase to phase or three phase voltage as a 400 volt and line to ground or phase to neutral or as a single phase as a if you divide by root 3 you will get this voltage and they all are working on how much frequency 50 hertz of frequency okay but in US Canada New Zealand they all having line to no line to line that is three phase voltage they are using only 208 volt and phase to neutral not phase to neutral word is not correct for them line to ground as a single phase they are using इसको divide करेंगे √3 से you will get what 120 volt but this voltage they are using only for the domestic purpose so that's why that accident due to the current in the US is less than the any other countries okay domestic purpose then line to line in the industries or commercial space they are using as a 480 volt and it's single phase you will check by dividing it three phase so by √3 you will get 277 volt it being used in the commercial or industrial project and they're working on what 60 hertz of frequency so our Revit software will having this range of voltage which we need to change into what our requirement ठीक है चल लिखिए
रेंजेस उतना कम हो, एक्सटेंड कम होगा आपका। पहले सऊदी में भी आपको एक ही घर में दो पॉइंट्स रहते थे, एक सॉकेट में 120 वोल्ट आता था और एक सॉकेट में 240 आता। दे आर यूजिंग द 240 फॉर द रनिंग द एसी and 120 for charging the iPhone, mobiles, any other appliances. But nowadays they are replacing the total with what as a 459 and 240. This meeting is going to be ended within 1 minute, so reconnect first. Over. Sir, which rating is better for applicants and Better accessories? is how we can't say which one is a better. It depends upon your app that countries wise. In India, that appliance has been designed as per the single phase voltage to 40 range. The same appliance you can't use to the word USA. If the product is manufactured to use within the US, you can't bring to the India. Okay, if you bring it, it will not work. Okay, so that manufacturing being done as per the same rating. So the in the domestic purpose, if you're using this voltage range, means the accident chances is getting less, whereas this will having the what more. Okay. After this voltage rating, आप इंडिया में नहीं ला सकते. You can't run it. It must be what as exported product. अगर वहां से आईफोन लेकर आ रहे हैं तो आपको चेक करना है कि वो एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट होना चाहिए. विद इन यूएस के लिए आप यूज नहीं कर सकते इंडिया में लाके उसे. ओके, दिस वन नाउ नेक्स्ट एज ए ना गिव द सब नहीं हो गया वोल्टेज रेटिंग खत्म. करेक्ट ना नेक्स्ट गिव द रेटिंग लाइटिंग फिक्चर्स. Lighting fixtures.
For it, let us try to learn about lumens. लिखिए first lumens. कभी ये वर्ड सुने lumens? कब? लाइट में बल्बों पे रहते हैं. Even it is about fundamental units. In physics, we have learned this. Fundamental units are what? Length, mass, then time, okay? Solid angles. There was a one terms illumination, okay? That illumination unit was what? Candela. है ना, ये वर्ड तो याद होगा, कैंडेला कुछ पढ़े थे, है ना, कैंडेला. इट्स अल्टरनेटिव यूनिट इज व्हाट? लुमेंस. Okay, so what is the lumens? So now from it, if you're going to purchase any bulb, just look over it. Okay, जब आप बल्ब खरीदेंगे, you can just observe over this bulb packet, it is written as a like this type lumens. 1300 lumens. Brightness how much? This much. It means it is a unit of measurement for the brightness of light. Okay, so जैसा how the what is the water load on that any plumbing fixtures? It is measured in the what? Water supply fixture unit. Length is measured in the which unit? Meter, centimeter. Similarly, the brightness of light is measured in which unit? In lumens. Right now, it is an unit of measurement. It is an unit of measurement for the brightness of light. It is an unit of measurement for the brightness of lamp, the brightness of light. Full stop. This value will be given by manufacturer of lamp. This value will be given by manufacturer of lamp. Manufacturer of lamp. Full stop. Next point. Lux. LX. लक्स LX. जैसे मीटर को कैसा बोलते हैं? M. किलोग्राम को kg. वैसा ही lumens को small lm. Lux as a what? Small LX. Like here, see, suppose that in a room, I have placed some lighting fixtures. Is it okay? Suppose 4 lights I have placed of having the lumens as 1,000 lumens. Is it that the total lumens of light will fall over our work plane? Work plane means the plane on which you will work or someone is going to work. Like in this classroom, you're having the 2 different work plane. One work plane is that where you are working, and there is a one work plane where I am working here. A little bit high, isn't? So this is 2 work planes. So your requirement means your calculations should be such that proper lumens, proper brightness should be on that both of that work plane at any cost. But when the total lumens is coming out, it will not 100% fall over our work planes. Why? Because some of the light will fall over the wall. Some of the light will fall over the floor. Some on the furnitures, different furnitures, on the different, even the false ceiling. Okay. That light, after falling over it, when that incident, they will get reflect back. Okay. But reflection depends upon material and color of that elements. Okay. Like if that, suppose that wall color is dark color, so dark color absorb more, reflect less. Okay. But light color absorb less, reflect more. Example, if I'm having one room 5 meter by 5 meter, I have placed one bulb and the total wall, ceiling, floor color is what? White color. Same size of room and type of room. I have done total wall, ceiling, floor as a what? Black color. Same type of light. So in which room we'll get the more light? In the white room, because
white color will not absorb, it will reflect back 100%. So that's why in that official space, means office spaces, we having the what light color of colors. Okay. In the houses, if you having the dark color, the light will be what dim, है ना? तो थिएटर्स में भी है ना, उसमें डिम चाहिए, मतलब माहौल जहाँ बनाना है वहाँ पे डिम रखना है, और जहाँ पे काम करना है वहाँ पे ज्यादा रखना है, ठीक है ना? ओके, तो दैट टाइप ऑफ लाइटिंग्स आर देयर. तो अब उस टोटल लाइट्स का, वट एवर द लाइट इज रिफ्लेक्टिंग बैक, how much the lumens is coming out, this overall, how much exactly light we are getting on our work plane, that is measured in which unit? Lux. That lux is also measured in lumens per meter squared area. Lux is equal to what? Lumens per meter squared area, right on? Lux, it is an unit of measurement. It is an unit of measurement for an amount of brightness, unit of measurement for an amount of brightness falling on the work plane per meter squared area, per meter square, amount of brightness falling on the work plane per meter squared area, full stop. It is also defined as lumens per meter square. It is also defined as lumens per meter square, full stop. This value will be given by, this value can be taken from, standard tables, standard tables, standard tables, IS 3646 or IES lux level. Okay, IS means here what? Indian standard. There is a table IS 3646 standard table, and IES means इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड. और कुछ लगा सकते हैं? इंडियन, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, नहीं, हाँ, हाँ, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये भी है. सो इट इज एक्चुअली सोसाइटी फॉर इल्यूमिनेशन इंजीनियर्स. लिखा हुआ आईएएस है, बट पढ़ना इधर से उल्टा है. व्हाट इज दैट? सोसाइटी फॉर illumination engineers. Actually, this short form is written in the Swiss language. उसके स्विस लैंग्वेज में देखेंगे तो आई का मतलब कुछ और है, तो उसका जो फुल फॉर्म अपने लैंग्वेज में आता है इंग्लिश में, वो क्या है? सोसाइटी फॉर इल्यूमिनेशन इंजीनियर्स. ओके, कोई बात, उसको उतना नहीं करना है, बस सिंपल आईएस लक्स लेवल, फुल स्टॉप. ठीक, नेक्स्ट राइट. इफिकेसी. इफिकेसी, इट इज डिफाइंड इन लुमेंस पर वाट्स. इफिकेसी. अच्छा, ये जो पढ़ रहे हैं अपन, ये इलेक्ट्रिकल नहीं पढ़ रहा है, ये पढ़ रहे हैं रिविट के लिए. ये सारे टर्म्स आते हैं रिविट में, ठीक है, इसलिए पढ़ रहे हैं अपन. Efficacy. Write down. It is an efficiency of lamp measured in lumens per watt. It is an efficiency of lamp measured in lumens per watt. In lumens per watt. Full stop. Like examples here. Suppose that on the bulb packet, it is written that power of that bulb is 100 watts rated, and the LOL, LOL, WhatsApp messaging, नहीं, वो LOL नहीं है यहाँ पे. It is what as a lumens of lamp. Okay, the lumens of lamp, suppose that it is what? 3000 lm.
lumens. So can you tell me what is the efficacy? Efficacy means the lumens per watt. So what is the lumens value? 3000. And what is the watts here? 100. So how much? 30 lumens per watts. So in the Revit, many times we need to convert like that. Okay? Sometimes on the same bulb packet is written like this way. Power is rated and efficacy is given. It is mentioned as a what? Efficacy as a 200 lumens per watt. 200 बहुत ज्यादा हो गया. 25 lumens per watts. So can you tell me how much the LOL, lumens of lamp? Simple, 150 into 25. Huh? 50, 3750. This much of lumens. No doubt. LOL, lumens of lamp. It's over. Efficacy. Now, next, give the subheading. Thumb rule for selecting lighting fixtures. Thumb rule for selecting lighting fixtures. Thumb rule for selecting lighting fixtures. So first look here. If LOL of lamp is given as a, for example, as a, I'm taking 7000 lumens and rated power is given, supposed as a 100 watts. Then for every 1000 cubic feet volume of the room, you need to select one lighting fixtures. Means we can say that number of light is equal to 1000 cubic feet. नहीं, one light per 1000 cubic feet. ऐसा लिख सकते. That is one light per 1000 cubic feet. लिखिए. But it is what thumb rule. Exact value will be given by the electrical engineers or lighting engineers. To mechanical people, the lighting placement calculations will be given by that electrical people. You need to just do the what modeling in the Revit. Even in the interview also, they will not ask you the question related to the electrical.
if your background from mechanical, but they will ask you the question from if your mechanical background, HVAC, plumbing, and firefighting. If your background from electrical, they will never ask you related to the mechanical questions. They will only ask you the electrical questions in the interview. But if they ask you and if you have able to give that answer, then they will get impress from you. ठीक? Fine, this one. Now, example, suppose कीजिए, there is a one office. There is a one office area whose height is given, supposed as a 15 feet. It is a supposed at 20 feet by 10 feet. And tell me, how many number of lighting fixtures we required here? बताइए. 3. Yes, correct. 3 number of lighting fixtures. कैसा निकालेंगे? तो first find out the volume of the room. So what is the volume of this room? It is a 20 into 10 into 15, which is equal to how much? 3000 cubic feet. So therefore, number of light is equal to, for every 1000 cube, how much? One light. So 3 number of light. No doubt. Over. 3. What do you mean by the socket? Socket किसे बोलते हैं? सॉकेट क्या करते हैं सॉकेट के साथ? तो अपन प्लग इन करते हैं. ओके, लाइक दिस टाइप. These are what as a sockets. तो इट इज हियर 6 एम्पेयर सॉकेट, जो अब जिसपे अपन टीवी पुट करते हैं, मोबाइल चार्जर, है ना, दैट व्हाट नेक्स्ट, बेड लैम्प, टेबल लैम्प्स. These are what as a you as a 6 ampere socket. Little bit big socket. It is 16 ampere socket. Used for what? Your motors. For what as a that your microwave, washing machines, refrigerator, geysers. This required what as a 16 ampere socket. है ना? तो अभी सॉकेट्स को वी आर सेइंग सॉकेट्स एज पर द वर्ड यूके इंग्लिश, यूके स्टैंडर्ड. इन यूएस इट इज कॉल्ड एज व्हाट? रिसेप्टेकल. इसको क्या बोलते हैं? रिसेप्टेकल. हाँ, उसका मतलब क्या होता है? सॉकेटिश होता है. ठीक है, राइट ऑन. गिव द सबहेडिंग सॉकेट्स. लाइटिंग फीचर खत्म हो गया. नेक्स्ट. नेक्स्ट गिव द सबहेडिंग सॉकेट्स. Under that, first write on standard socket. There will be the two category of socket, standard and GFCI. Standard socket. Uske in front of that write on this type of sockets will be used. These type these types of sockets will be used for dry area. These type of sockets will be used for dry area. Example, office, bedroom, classroom, and etc.
full stop. Next write down GFCI. GFCI सॉकेट का टाइप है ये. GFCI. In front of it write down it is known as ground fault. It is known as ground fault circuit. Ground fault circuit interrupter. इंटरप्ट करते ना, इंटरप्टर. Full stop. This type of sockets are used for wet area. This type of sockets are used for wet area. Example: washroom, bathroom, laundry, and etc. कुछ भी लिख लीजिए उसमें. वॉशरूम, बाथरूम्स. डोमेस्टिक फॉलो नहीं होता है. क्यों नहीं होता? और यहाँ पे कोई इंस्पेक्शन नहीं आता ना, इसीलिए. ओके. So GFCI will be used where? In that wet area like a bathroom. Okay, why? Suppose that when at the moment when you are touching the switch to on, suppose you are using the grinder. Sorry, grinder बोला, trimmer, है ना, washroom में use कर रहे हैं अगर. If you make it on the charging, if you're switching on or switching off, suppose that if there is a fault and you are trying to switch on, that fault current, your body is already wetted. So because of the wetted, your resistance of the body will get reduced. तो reduce हो जाएगा तो क्या होगा? The fault current will try to flow through your body to the grounding system. If the socket is not as a GFCI, what's happened? It will let you the flow. So there is another also safety switches. There's also another switches are there. But what's happened at the moment, if the switches are the GFCI type, what's happened? That switch will get trip out automatic. When that moment the flow current will try to flow through your body. So backside, the socket, what we are seeing, there is a normal type, isn't that? The sockets, normal type. GFCI, it the backside having the what? RCCB built in that. So when the current try to flow through the body, what happened? The socket will get tripped there only. मतलब पूरे फ्लैट का पावर नहीं जाता, सिर्फ सॉकेट का पावर चला जाता. And you will be the safe. Back of this socket, beside the socket, you will having the again reset point. Reset it, the power will be supplied. So by this way, what happened? The people will be safe. Okay. और अपने यहाँ क्या अपन थोड़ा सा बोल्ड है, जो होगा देख लेंगे उसमें क्या. So in the alternative to this, we having that central RCCB in the panel boards. Okay. तो अगर सपोज कोई टच कर रहा है, जैसे लैपटॉप चार्जिंग पे लगा रहे, तो अपन को फील होता है कभी कभी शॉक लग रहा है ना, तो बोलते हैं ना अर्थिंग ले रहा अपने को. ओके. तो पैर अगर जमीन से निकाल लिए तो नहीं लगता, फिर टच करे तो लगता है ना, बिकॉज दिस इज ट्राइंग टू फ्लो थ्रू योर बॉडी, but you having the earthing system in the building, so that's why you are safe. Okay, otherwise direct contact हो जाएगा फिर. ठीक है. So this is the thing. Say now next point right now, and on the same in the just point में लिखे the elevation for the elevation for standard socket. Next point, the elevation for next point में लिखे the elevation for a standard socket is 300 mm to 500 mm from FFL. 300 mm to 500 mm from FFL, whereas GFCI socket is 1000 to 1500 mm.
1000 mm to 1500 mm from FFL, from FFL finished floor level, full stop. ठीक है. Now next, give the heading electrical standards. Electrical standards. So these are the some standards, so but not total. Write on the first one NEC, second BS, click here. First and second write on NEC, BS, NEC, BS, then write on BIS, Bureau of Indian Standard. आप पहले NEC BS लिख लीजिए, इसके बाद लिखिए BIS, BIS, then write on IEEE, then last as a DEVA, IEEE, then DEVA. BIS के बाद लिखना है IEEE, then DEVA. Over. Next, give the heading electrical building services. यहाँ से लिखिए फर्स्ट वन लाइटिंग सर्किट, नोट डाउन दिस टोटल. Lighting circuits, note down this total. आज क्या है, ट्यूसडे है ना? मुझे लग रहा अजीम को शायद बोले होंगे, आपको याद कर रहे हैं आदिल से. Over. Write down this appliances and this total. हाँ पूरा लिखे appliances, then watts, this one total. बस ये लास्ट है लिखना.
टेम्पलेट नहीं, लिखने का लास्ट बोलो, इसके बाद तो रहता ही, अभी आधा घंटे टाइम है। पूरा खत्म। Sir, this limitation max 3000 watt and max 3 points for one phase or three phase? No, no, for single phase, one phase. Okay. And also max 3 points means three connections or three No, I applicants. will explain. Yeah, I will explain it. Just a minute. Okay. सर क्लासेस और कितने दिन चलते सर? Classes, I think you will get up to 20th of this month. 20 तारीख तक रहता है शायद अभी क्लास। 15 तक आपके इलेक्ट्रिकल हो जाते हैं, उसके बाद फिर जनरल टॉपिक्स रहते हैं, प्रिंट लेआउट, नाविस वर्क, डायनामो, ये सब। ठीक है। So what we have written here, see how the power is distributed from the transformer. Tell me, from transformer the power supply will come to first main distribution board. For the whole building there is a main distribution board. From the main distribution board where the power will connect, yeah, so each floor will having the what one main distribution board, that is what called as a SMDB, sub main distribution. From there each floor SMDB, if we having what multiple number of flats or shops, each flat and shops will having their distribution board like this type, you know. So they will come. Now from here we have to take the what cables to connect what as a light, fan, AC, geyser, whatever things. Okay, so what is the rule is given here? See, the rule is given, if it is lighting circuit means what, low voltage circuit where you can add light, fan, exhaust fan, doorbell, dedicated 6 ampere socket. The circuit means what, you can take in what as a cable, one phase, one neutral cable you are taking from the what, this distribution board. So if you take one circuit as a lighting, you can add this much number of points, means this type of points you can add it. Then as per the NEC and the BIS standard is that on one circuit you can add maximum how much points,
10 points. The points are here what? Light, fan, AC, that's are the what points. So maximum how much points you can add? 10. And the total watts of that point should be how much? 800 watts. जैसे घरों में जब वायरिंग कराते हैं टेक्नीशियन को देखेंगे, एक केबल लेके आता, बहुत सारे लाइट को ऐड कर देता, फैंस को ऐड कर देता उन्हें, तो वो उसकी अपनी खुद की स्टैंडर्ड रहती है, ठीक है. बट एज पर द स्टैंडर्ड हाउ मच इट इज, एज पर NEC and BIS, in the one circuit you can add maximum how much? 10 points, and the total watts of that 10 points should be not greater than 800 watts. As per the BS and Deva, they're recommending how much maximum points? 12 points, and watts how much? 1200 watts. Is it okay? The difference between these both standard is the cable size. The cable size for this, it is taken as a minimum 1.5, whereas it is taken here as a 1.5 to 2.5 square mm. So that's why number of point is more and the watt is more here. Is it okay? कुछ नहीं, सिर्फ 1.5, ठीक है. और BSO देवा में क्या ले सकते हैं मैक्सिमम? 2.5 mm square the cable we can take it here. Understand this point here? What is it? Similarly, come to the power circuit. In the power circuit, it is a what? High voltage circuit where we can add this much different types of load. Here look that in power circuit, it is a high voltage circuit. And what is the rule is written? As per the NEC, BS, BIS, DEWA, if you take one circuit from distribution board, how much points you can add maximum? 3 points. And what the total watts for that points? 3000 watts, not more than that. Okay? मतलब एक सर्किट लिए तो 3 पॉइंट्स आते थे. Combination can be what? Sockets. But there is a one restriction beyond that, that if you are taking AC, for each AC and geyser, you should have to give the individual circuit. अगर 2 AC है तो कितना सर्किट लेना होगा? 2 लेना होगा. 10 AC है तो कितना? 10. For each AC, we have to take what as a separate circuit. For each geyser, we have to take what as a separate circuit. Okay. So this rule is for what? Sockets. 6 ampere, 16 ampere socket. But there is an exception behind that. That is what? For each and every AC and geyser, how much? Even the 20 ampere and 25 ampere socket also. Right on? Note. 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 For each and every AC, comma geyser. For each and every AC, comma geyser, comma 20 ampere socket and 25 ampere sockets. And 25 ampere socket shall be fitted with individual circuits, shall be fitted with individual circuits. Full stop. It's okay. So these were some introductions about that electricity. Give the heading. Revit electrical procedure. Revit electrical procedure.
Revit electrical procedure. Revit electrical procedure. Same step 1. Customizing template for electrical services. Customizing template for electrical services. Step 1, customizing template for electrical services in the A bit. क्या लिखते हैं A bit में? लिखिए open electrical default template under US metric. Open electrical default template under US metric. Full stop. So अभी यहाँ पे हर जगह पे अपन US imperial ही है, यहाँ पे US metric क्यों? Because that unit, lumens, lux, these are in the what SI unit. So the every time you have to change it. So that's why we are keeping as what metric system. Okay. Under what US metric. Full stop. In the B bit. In the B bit. Give the heading electrical setting. B bit heading right down electrical setting. In the bracket ES. Shortcut is ES. Electrical setting. Remember mechanical setting we have done? Where was that? In manage tab setting panel MEP setting. Okay. Or either you can type just as a MS. Similarly, you type here ES, you will get that. Okay. Right on. Type ES. Type TYP. Type ES. General. अच्छा उसमें ये देखिए टाइप ES. इसके बाद देखिए फर्स्ट पॉइंट जनरल. First point, general. In front of it, right on. Change ABC as a RYB. Change ABC as a RYB. Change ABC as a RYB. Second right. Voltage definition. Second right on. Voltage definition. Hit on add. Hit on add. Add ADD. Hit on add. ADD add. Hit on add. अच्छा अब देखिए क्या ऐड करना है. What do you have to do here? First you have to open the what? Electrical template under US metric. So new, browse, then US metric, then electrical default, open. The next what? So very simple, type here what ES. So after opening the template, how will you cross check it whether you have opened the correct template in the project browser? It's perfect. Now type here ES. This window will get open. Or either if you go for the system tab, here we having electrical panel. If you hit on this arrow, same window. Or it is available here, manage tab, setting panel, MEP setting. Here we having electrical setting. Okay. Another you have written first what as a general. What is coming here label ABC. So as per US, they are giving that phase name as a what ABC. But in our country, what we are giving RYB, red, yellow, blue. Okay. So that's why RYB. Okay. Second, what we have written voltage definition, heat on add. यहाँ देखिए add है. Now, can you look here? So
we want the voltage as a what? 11 kV, because transformer also we need to connect. So 11 kV, 415 volt, as well as what? 240 volt. 3 voltage we want here. 240 is available. Do we having 415 here? No. 11 kV here? No. So we need to create here voltage definition. How? Simple hit on the word add. Name, it is just as a name. I'm giving the name as a what here? 11 kV. थोड़ा सा different रखेंगे, पहचान में आता. 11 kV. The value for 11 kV is the same, 11 kV only. The 11 kV is equal to how much volt? 11,000. It will convert automatic 11,000 volts. The minimum how much? You need to take as a what? 10 kV, and maximum as a 12 kV. That between 10 and 12 kV, we having the what? 11 kV. Correct? As similarly, we need to create for what as a 415 volt. The name as a what? 415 V volt. Value for 415 as a how much? Same. 415 only. Minimum as a 400, and a maximum as a 440. ओके, समझ में आया? ठीक है, खामोशी से रट्टा मार लेंगे अदरवाइज. ओके, तो जस्ट ड्रॉ दिस टेबल बट ओनली विथ दिस टू वैल्यू. ये तो डिफॉल्ट है, ये आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. ओनली जस्ट ड्रॉ दिस टू वन. वो कर सकते हो ऐसा ऐसा. ओनली ड्रॉ दिस टू. गिव द हेडिंग एज अ नेम एंड देन दिस टू. 240 तो डिफॉल्ट रहता है, उसको आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है ना. नहीं दिए तो एक वायर भी कनेक्ट नहीं होता. ठीक है, ओवर. थर्ड पॉइंट राइट डाउन. डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. आफ्टर दिस, नहीं नहीं ओके नहीं बोलना है, थर्ड पॉइंट लिखना है. डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. Distribution system. So how many distribution system we required here? Two. Transformer 11 kV, input output as a what? 415. तो 11 by 0.415 kV. दूसरा क्या चाहिए? 415 by 240. ये दो डिस्ट्रीब्यूशन अपने को चाहिए. लिखिए. Heat on add. Heat on add. Heat on add. अच्छा, पहले देख लीजिए यहाँ पे. तो फर्स्ट नाम क्या देंगे अपन? 11 by 0.415 kV. Name. It will phase as a what? Three phase. It will be configuration of delta 3. Line to line voltage will be how much? 11 kV. इसमें न्यूट्रल नहीं आता, इसलिए इसकी वैल्यू हाइड किया हुआ. अगेन add it. Name as a what? 415 by 240 volt. It is also what? Three phase, but it will be in the what? Y configuration, and having the 4 wires. Three phase, one neutral. The 4 wires. L to L means what? Three phase voltage. So three phase voltage is how much? 415. 415. ये तो अपन क्रिएट करे तभी चाह रहा है. 415 वोल्ट. लाइन टू ग्राउंड मीन्स व्हाट? फेस टू न्यूट्रल. हाउ मच इट इज? 240 वोल्ट. ड्रॉ दिस. 11 kV में न्यूट्रल नहीं आता है.
415 में रहता। तो 415 का है ना यहाँ पे। सिर्फ नीचे का 2 लिखना है बस। ट्रांसफार्मर में, हाँ, वो वायर जो आते हैं वो 3 आते हैं, और जो बाहर आते हैं वो 4 आते हैं। तीनों फेज रहते हैं करंट। बाहर जो निकलता है वो 3 फेज और एक न्यूट्रल आपको वहां से जनरेट होके आता है। ट्रांसफार्मर के नजदीक में आप देखेंगे देर इज अ 1 4 इंच पाइप डिप इनसाइड दैट अर्थ, और वहां से एक पट्टी रहता है, स्ट्रिप, वो ट्रांसफार्मर में गया रहता है, वही से न्यूट्रल आता है। वो न्यूट्रल ही है आपका। कहीं पे भी जनरेटर देखे होंगे, तो जनरेटर के पास में देखेंगे एक रॉड आपको नीचे डिप किया रहता है, वहां से न्यूट्रल निकालते हैं। या नहीं तो बिल्डिंग का न्यूट्रल यूज करके उसको ग्राउंडिंग कर देते हैं, अर्थिंग का। शीट वो कॉपर प्लेट रहता, वहाँ वो अर्थिंग रहता आपको क्या हुआ। अब ओके लिख सकते हैं जी। ओवर। आफ्टर दिस राइट ऑन ओके। तो ये इलेक्ट्रिकल सेटिंग करना है अपन को। नेक्स्ट राइट ऑन, व्हाट वाज द पॉइंट, ए बी, देन सी बिट। सी बिट क्रिएटिंग सब डिसिप्लिन फॉर, creating sub-discipline for FAPA, सब-डिसिप्लिन फॉर FAPA। ठीक है, क्या है FAPA? आज ही से इलेक्ट्रिकल में पढ़े अपन। FAPA स्टैंड फॉर व्हाट? फायर अलार्म पब्लिक एड्रेसेबल। FAPA स्टैंड फॉर व्हाट? फायर अलार्म पब्लिक एड्रेसेबल। पब्लिक एड्रेसेबल मीन्स योर स्पीकर्स, जो फायर फाइटिंग में हुटर रहता है ना, पब्लिक एड्रेसेबल। कहीं पे लिख लीजिए फुल फॉर्म FAPA। फायर अलार्म पब्लिक एड्रेस, एड्रेस बताते हैं ना, एड्रेस, एड्रेसेबल, एड्रेस एड्रेसेबल। ठीक, लिखिए। हाउ टू क्रिएट द सब डिसिप्लिन। लास्ट क्लास में करे थे ना अपन फायर फाइटिंग के लिए सब डिसिप्लिन। लिखिए फर्स्ट में, व्यू टैब, क्रिएट पैनल। अच्छा, विच प्लान वी रिक्वायर्ड फॉर द FAPA, फ्लोर प्लान और सीलिंग प्लान? Why ceiling plan? Because firearm devices will be in the ceiling only. So that's right on. View tab, create panel, plan view. View tab, create panel, plan view. अच्छा, कोई क्लासेस के लिए पूछे थे कितने कब तक है, तो टाइम पूछ रहे थे या फिर डे पूछ रहे थे? डे डे पूछ रहा था। अच्छा, डे पूछ रहे थे, ठीक। व्यू टैब, क्रिएट पैनल, प्लान व्यू, रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान। प्लान व्यू, रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान। एडिट टाइप, edit type, go to view template, apply to new view. Go to view template, apply to new view.
new view, select electrical ceiling, select electrical ceiling, duplicate, select electrical ceiling, duplicate, name as FAPA-CP, FAPA-CP. Okay. View properties, subdiscipline, view properties, subdiscipline, type FAPA, type FAPA, apply, OK, OK. 2 times, apply, OK, OK. Uncheck, do not duplicate existing view. Uncheck, do not duplicate existing view. Uncheck, do not duplicate existing view. Select levels, OK. Select levels, OK. Select levels, OK. See here, main discipline as what? Electrical. Sub-discipline what we having? FAPA. Another FAPA we having the ceiling plan levels. Full stop. In the next paragraph. Our application menu save as family. Sorry. Our application menu save as template. Our application menu save as template with a name electrical template. With a name electrical template. With a name electrical template. Close the current window completely. Close the current window completely. Full stop. In the next line. Recent file window, new, browse. Recent file window, new, browse. Select that electrical template. Select that electrical template, open. Select that electrical template, open. Okay. Full stop. Step 2. Step 2. Link Revit for electrical services. ठीक है? Step 2. Link Revit for electrical services. Another try. No? Follow the steps for Link Revit. Follow the steps for Link Revit. कैसा करना? Follow. First, go to the what? Any of the elevation view. Delete all the levels. After that, then insert tab, Link Revit, architecture plan, auto origin to origin, open. That's all. Next, collaborate tab, copy monitor, select link file, copy option bar, select all the labels. First, finish in the option bar. कितनी दफा अपन लिंक रेविट कर रहे हैं? 5th time. This is what as a 5th time. Still, then when they are going to interview, they are unable to do the link revit.
इंटरव्यू में जा रहा है तो भी लिंक रेविट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो दैट इज अवर जस्ट ओनली मेथड ऑफ प्रैक्टिस। कॉपी मॉनिटर टैब, फिनिश। आफ्टर दैट वीजी, क्योंकि यहाँ पे देखो डबल लेवल दिख रहा है अपने को, तो वीजी। नेक्स्ट रेविट लिंक, display setting by host view, basic custom annotation here as a what custom, then what as a label, uncheck it. Okay, okay. Next, after that, copying the labels, the view, plan, floor plan, edit type, electrical plan. Under that we must having the what power. Okay, ये default रहता, select all the labels. Okay, now look here, we want the lighting. Under that what as a ceiling plan, so for that plan view, reflected ceiling plan, edit type, यहाँ पे FAP आ रहा, but we'll change it to the what electrical ceiling. And the ceiling plan we want as a what lighting. Okay, okay, select all the levels. Okay, we can have a main discipline electrical, sub discipline what as a lighting under that ceiling plan. At last FAPA, so FAPA we want under what ceiling plan, reflected ceiling plan, edit type, go to here, which one we select here, FAPA CP, sub discipline FAPA, apply. Okay, okay, there's no labels, so uncheck the what, do not duplicate existing view, select the total. Okay, see main discipline, sub discipline, ceiling plan. After that, select all the labels, then view template, edit, none, apply. Okay. Next, changing the what half tone, manage tab, setting panel, additional setting, half tone underlay, go for as a what 90. Next, what room bonding, I'm unable to check, so for that unlock it, select the link file, pp edit type, check the room bonding. Okay, again lock them. Next, ceiling plan, so we know that the height or everything, the system tab, sorry, analyze tab, spaces, how much the height, 10 feet, it will convert it into automatic. यहाँ पे कितना था 11 feet, give here 11 feet, it will convert it into automatic. Here we having how much, same 10 feet, here also 10 feet. In this area 12 feet 7 inch, 12 feet space 7. अच्छा, इसे क्या पता कि फीट में होना है, क्योंकि यूनिट तो में है, तो वी आर टू टाइप हियर व्हाट 12 feet 7 inches, then it will convert it into ठीक है. The next level 2, again analyze tab, how much 10 feet, they all are the 10 feet here. सर प्रोजेक्ट बेस पॉइंट रिलेटिव वो तो चेक करने के टाइम में कर ले सकते हैं, अगर मुझे पता है तो फिर कोई बात नहीं. So if you want to check it, height here, EL, so it will not show you the correct value. It is showing me 7010 mm from the ground. Then in that case, we can go forward, changing here what the project base point as a relative. Then if you know that, not necessary. So this place how much? 12 feet 7 inch. So 12 feet space 7 double dash inches. यहाँ पे भी सेम है. अच्छा, लास्ट टाइम दिए थे क्या नहीं? So, next after it, second floor space 10 feet, $12 feet space 7 inches.
It's over. Now naming, how we'll do that? Space naming. Name only all the layers. All the spaces name we having here. Next, step number 3. Step number 3. Creating a space schedule for electrical. Creating a space schedule for electrical. Write down under that. Analyze tab, schedule and quantity. Analyze tab, schedule or quantities. Analyze tab, schedule or quantities. Under category, select spaces. Under category, select spaces. Name as a space schedule for electrical. Okay. Name as a space schedule for electrical. Okay. Add label, add label, comma, name, comma, number, comma, space type, comma, area, comma, area, and average estimated illumination, and average estimated illumination. Sorting or grouping. Sorting or grouping. और next point में लिखेंगे. Sorting or grouping, label, header, footer, totals only, blank line. ये क्या बना रहा है? BOQ. हाँ, BOQ में चेंज होता है. हाँ, फॉर्मेटिंग. नेक्स्ट लिखिए फॉर्मेटिंग. Select label, check hidden field. अच्छा, एरिया ऐड नहीं हो पाया यहाँ पे. क्या थे? लेवल, नेम, नंबर, स्पेस टाइप, एरिया एंड एवरेज एस्टिमेटेड लिमिट. ये तो लिखे थे ना. ओके. नो फॉर्मेटिंग. सेलेक्ट लेवल, चेक हिडन फील्ड. Select label, check hidden field. Select area and average estimated illumination. Calculate totals. Select area and average estimated illumination. Select calculate totals. Average estimated illumination. What is the meaning of illumination? Illumination. Acoustic. Acoustic. The science which deals with the sound is called as acoustic, and the science which deals with the light is called as what? Illumination. Physics में पढ़ना है. अभी कुछ भी नहीं, सब पहले का पढ़ने का है. बचपन की गलती. यहाँ देखिए. Okay. Calculate totals. Okay. So, you see, we're having the schedule for the what? That electrical. Here it is mentioned what as an average estimated illumination. You can't change this value manually. So when you will place the lighting fixture in a room, automatically the lux value will be changed here.
Okay, so we see that here we need to change what as a space type. By hitting on the three dots, you can change it. The last write down for today. Step 4. Step 4. Space tag as per electrical. Space tag as per electrical. Write down. Select any space tag. Select any space tag. Select any space tag. Modify tab, edit family. Select any space tag. Edit family. Select a space name label. Select a space name label. Select a space name label. Edit label. Edit label. Add average estimated illumination. Add average estimated illumination. Check break apply OK. Check break apply OK. Check break apply OK. Load into project and close. Check break apply OK. Load into project and close. मैं यहाँ पे सेव नहीं कर रहा हूँ क्यों? Because all the room spaces must having the same type, because in the washroom also we need to place the light. तो लक्स वहां पे भी चाहिए. Load into project and close. Override the existing version. Override the existing version. Continue. Override the existing version. Full stop. Here can look. In the space tag we having written here 0 lux now. So if you place any lighting fixtures, automatically what's happened, this lux value will be changed. Okay. So we'll stop here with this today. Inshallah, tomorrow we'll see that all these things. Okay. Goodbye. Love Hafiz. Step 5. Step 5. Right now. Placement of lighting fixtures. Placement of lighting fixtures. Placement of lighting fixtures. Now, here see that account department, its schedule that what is the area? 43 meter square. Okay. So if I select this as space line, it will show me the volume also here. What is the volume of this room? 131 meter cube. If I want to add the volume in this schedule, how will I add it? Go to the what field? After area, I want to add here what? Volume. That's it. Only we need to make a change that I want the total volume area. So volume unit is what here? Meter cube. I want to know in cubic feet. How to change it? Just select this column, unit format. It is now taken as what? As per the project. Uncheck it. I want as customize cubic feet, 2 decimal point, feet cube. So for the account department, what is the volume of the room? 4654 feet cube. So how many number of lighting fixtures we require? So for every 1000 feet cube, we have to take what as a one light. It is a 4654 means 4.6. That is a 5 lights.
So we can round it up to what? 6 number of light. Correct? We'll round it up to what? Round it up to what? 6 number of lighting fixtures. So let's see. So we have changed the unit in that schedule, but if you check here, still the unit will be the same as a meter cube. Okay. So its schedule unit will be different. Okay. And the project unit is different. Fine. Now next here, see, I like to place that 6 number of light in this account department. So how to make a placement? Right now. PB, go to required ceiling plan level. PB, go to required ceiling plan level. PB, go to required ceiling plan level. System tab, electrical panel. System tab, electrical panel, lighting fixtures. System tab, electrical panel, lighting fixture. Load family, lighting fixture, load family, US imperial, sorry, US metric, load family, US metric, lighting, US metric, lighting, MEP, MEP, internals, MEP, internal, select required lights, open, select required lights, open, full stop. तो अभी देखिए मैं यहाँ पे ये लाइट लोड कर रहा हूँ, डाउन लाइट, recessed can type, even the pendant type, I'm taking this to thought as a wall mounted type. ठीक है, मैं ये सारी लाइट चाहता हूँ ओपन. तो लाइट क्या होगा यहाँ पे? लोड होगी. फुल स्टॉप. इन द नेक्स्ट पॉइंट, सेम स्टेप, in the next line write down, in the next line write down, system tab, lighting fixture, system tab, lighting fixture, system tab, lighting fixture, PP, 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 select 600 by 600 dash 120, PP, select 600 by 600 dash 120, 600 by 600 120 under plain recessed lighting fixtures, under plain recessed lighting fixture, plain recessed lighting fixture, plain recessed lighting fixture. यहाँ पे देखिए, this 600 by 600 is the size of the lighting fixture, square shape, and the voltage is how much? 120. 120. But we want how much of voltage? We want the voltage 240, because light single phase voltage how much? 240 we want here. So we need to change it. Okay, so you can select any of it. Okay, I like to go forward 600 by 600 1-20. Edit type. देखिए, edit type. Edit type. Duplicate. Duplicate. Name as Osram at the rate of 7000 LM lumens and at the rate of 100 watts. Osram at the rate of 7000 LM at the rate of 100 watts. Okay, so this lumens or watts will be mentioned in your CAD drawing, or the schedule will be given by the whom?
your lighting designer. Okay, in this room, means schedule will be like that, room wise. Room, number of light, how much that, lumens and wattage. It will be given to you. I will take as a thumb rule. Okay. 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 Blast voltage 240. Blast voltage, BALLAST. Blast voltage 240 volt. Apparent load 100. Apparent load 100 watts. Apparent load 100 watts. ओके सो अगर 100 वाट्स दिए तो ये यूनिट क्या आ रहा, VA, वोल्ट इंटू एम्पेयर, इट इज इक्वल टू वाट्स ओनली. तो इफ यू वांट टू चेंज, यू कैन चेंज द यूनिट. तो 100 वाट्स. इनिशियल इंटेंसिटी, इनिशियल इंटेंसिटी, इनिशियल इनिशियल इंटेंसिटी. तो इनिशियल इंटेंसिटी में ऑप्शंस है यहाँ पे, यू हैव टू गो टू इनिशियल इंटेंसिटी. wattage 100, wattage 100, efficacy equal to efficacy. So if your light lumens is 7000 and watts is 100, how much will be the efficacy? Efficacy की वैल्यू क्या होंगे? So what is the unit of efficacy? Look here, lumens per watt. So what is the lumens value? 7000. Watts value 100 divided by 100 कितना आएगा? 70. देखो efficacy 70 lumens per watt. Efficacy 70 lumens per watt. So here see, if you change the efficacy, just to observe here, luminous flux, how much? 7000 lumens. Okay. 2 times. Okay. Okay. Modify tab, place on face. Modify tab, place on face. Modify tab, place on face. Then place it. Then place it. Full stop. So, as a same placement, like a x plus 2x plus x. So, what is the room size? We'll first write down. That for account department. How many number of light we required here? 6 light. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. From the wall to the light, x. So light to the light, 2x. Again, same light to the light, 2x. Wall to the light, x. Similarly, in the y also y. Light to the light, 2y. And it says what? Y. So what is the distance? We like to measure it here. How to measure it? Di. Take as a wall face. 7382. And this side is 5858. It is 7382 mm, or here is what? 5858 mm. बताइए how much is x? 2x and y 2y. So x is what? 6x total is equal to 7382. What is the x? 1230.3 mm. So 2x is equal to 2460.6 mm. So in the y side, it is how much? 4y. 4y is equal to 5858. How much the y? 1464.5. So 2y 2929. Note down this first.
Over. So as for the same distance, we like to make a placement. So we'll take the help of detail line. So DL, line type as a hidden line. Then offset. How much offset in the X? 14.5. So नहीं नहीं, X का पूछो ना, ये Y का है. Okay. 2Y कितना? 2929. In X how much? 12.3. So 2X 0.6. It's fine. Now the system tab, lighting fixtures already we have created. Then place on face just will be hit here. Even you can use the array to make a placement. With different lines है. सर लाइट प्लेसमेंट के टाइम में सर उसको फॉल सीलिंग को हिडन नहीं कर सकते सर? कर सकते हैं बिल्कुल, अभी भी कर सकते हैं इसमें तो शायद लाइन का रेफरेंस नहीं है. करेक्ट, वैसा कर सकते हैं. Now next, so like this way we can have a placement. So after placing the light, check the schedule. How much lux is coming? 488. Even if you go for the floor plan level, it will show you 488. So this lux, how much we need to maintain? From where we need to collect this data? From the standard table. What is the table number? IS 3646. Okay. From IS 3646 table, we can search for what lux level. So which room it is? Account department. So let us search here. Control F. Account. So with the name account, there is a no room. So we can go for what? Space like a bank space. In the bank and building, counter office area. How much is giving the lux level? 300 to 500 to 750. How much we have gotten here? 488. Is it lying between them or not? Yes, perfect. Okay, so always you have to cross check from the what? This lux label table. So it's fine then.
As similarly, if I want to place a lighting fixture to this room, library. So for it, and even if you select here this space line, it will show you here also that average estimated illumination, how much? 488.41 lux. Now, as similarly, I want to place the lighting fixture here also, and this is disturbing. So we can take the total, filter, check none. I want to check only with a space and pin it. That's it. अब यहाँ पे मुझे place करना है. This is step false ceiling. So on the lower step and the upper step, both I want to place. And it is what as a library area, I think so. It is a library. So let us search for in the library reading area, how much the lux we need to maintain. So library, libraries, reference, any others? Seminar rooms, yeah, teaching area, libraries. How much it is? 200 to 300 to 500. Okay, minimum 200, maximum 500 lux we have to maintain. Let us show how to placement. So I want to place here the small light, spotlight at this area. रहते हैं ना आपको स्टेप के नीचे छोटी लाइट लगी रहती है, and in the between has some little bit big light. So let us go for the system tab, lighting fixtures, PP. I just have loaded earlier that down light. Okay, select any of it, then edit type, duplicate. So what the schedule of the light is given for that room, okay, this type of light we have used in that room for by the electrical engineer, you can change it. Suppose the light being used now for the company as a Opel at the rate of as a 2000 lumens, or take as a 1500 lumens, and at the rate of watts as a 50. तो ये नाम कुछ भी दे दिया अपन. Okay, next. What we will change here? कोई सा भी लाइट हो, फिक्चर्स लेंगे, उसकी वोल्टेज और उसके वैट्स और इंटेंसिटी चेंज करेंगे. तो टेल मी व्हाट यू विल चेंज योर फर्स्ट वोल्टेज. हाउ मच वोल्टेज? 240. हाउ मच wattage? 50 watts. That's it. Next, what you have to change here? Initial intensity. Hit on it. So watts how watts how much? 50. 50 watts. So what will be the efficacy? 30. 1500 by 50 कितना होगा? 30. Just okay. 1500 lumens. Okay. Then after that, place on face. Place it random. I'm placing here randomly. 1. This area as a 2. This side as a 3. Here also 1, 4. This corner as a 5. 6. Okay, so as a same as a take as a here 6, get similar, place on face, place it. 1, 2, 3, 4. So after placement of the lighting fixtures, let us check it here. How much the lux we are getting? 469. Maximum how much we need to maintain? 500. It is coming 469. Yes, we are in the safe side. Suppose that even in this room, in the center, I want to place as a suspended type of light here. That is called as what? Pendant light. We have already loaded here. Select how to make a placement, tell me. Select any of it. Select among any of it. Edit type, duplicate. Okay. Suppose now light I am using what as a Philips light. Now Philips at the rate of, suppose it is of how much lumens? Oh, 2000 lumens. At the rate of, suppose that as a some same 50 watts only. Okay. How much voltage? 240. Wattage how much? 50. Next, what we have to change here? Initial intensity. Hit on it. Change the wattage. How much? 50.
Efficacy will be how much? 40. That's it. 2000. Okay. Okay. आसान lighting placement करना. That's it. Then after that, place on face. Place at the center. Now, look here how much it is coming. 525. So it is beyond the limit. Okay, no problem. We can take it. Little bit 10 to 20% extra. We can take it. No problem. It's okay then. 525. So like this way, we need to make a placement of the lighting fixtures to each and every rooms. It's easy. Achha. In electrical, just try to understand starting some 3-4 steps. Same steps will be repeated for each and every elements. Okay. आज की half day class समझ लीजिए अच्छे से. Remaining will be the same. Okay. Let's try it now. Next, after placement of lighting fixtures, I want to place here, suppose that as a sockets. है ना, मुझे यहाँ पे क्या placement करना है? Sockets. तो for the socket placement in any room, we required minimum as a 26 ampere and 116 ampere socket. किसी भी रूम में minimum कितने चाहिए? 26 ampere and 116 ampere. This is what here minimum. Maximum how much you want, you can place it. Okay. In kitchen or laundry, just opposite. In kitchen or laundry, minimum 216 ampere and 16 ampere. याद रहेगा ये बात? Very simple. Okay. What here? Minimum. Maximum, how much you require, you can take it. There's no problem. Next step right now. Placement of sockets. 6 ampere socket. सब 6 एम्पेयर हो जाता है. वहां पे 16 एम्पेयर की जगह पे यूएई में आपको 13 एम्पेयर का यूज होता है. 16 एम्पेयर की जगह पे वहां पे 13 एम्पेयर का यूज होता है. हाँ, लॉन्ड्री में और किचन में मिनिमम 16 एम्पेयर एंड 16 एम्पेयर. ओके. तो क्या लिखे? प्लेसमेंट ऑफ सॉकेट अंडर द फर्स्ट पॉइंट राइट हो. तो वेरी विल मेक अ प्लेसमेंट फ्लोर प्लान और सीलिंग प्लान. Socket will be floor plan or ceiling plan. Obviously floor plan. I know. PB, go to required floor plan. PB, go to required floor plan. PB, go to required floor plan. Go to required floor plan. System tab, electrical panel. System tab, electrical panel, device. System tab, electrical panel, device. Device. You see, system tab, electrical panel, device. Electrical fixture. Device, electrical fixture. Electrical fixture. PP, standard. कितने टाइप्स के सॉकेट रहते हैं? 2 टाइप्स के, स्टैंडर्ड एंड GFCI. तो आई लाइक टू प्लेस फॉर द अकाउंट डिपार्टमेंट. तो विच वन यू विल सिलेक्ट है, स्टैंडर्ड और GFCI? स्टैंडर्ड, बिकॉज स्टैंडर्ड यूज फॉर ड्राई एरिया, GFCI फॉर वेटेड एरिया. तो क्या लिखे? PP स्टैंडर्ड. एडिट टाइप डुप्लीकेट. एडिट टाइप डुप्लीकेट. नेम एज 6 एम्पेयर 6A socket. Name as 6A socket. Okay. Okay. Switch voltage. Switch voltage 240. Switch voltage 240. Load 100 watts. Switch voltage 240. Load 100 watts. Label 6A. Label 6A. Label 6A. Okay.
500. Elevation 500 mm. So you have written in the last class that 300 to 500 is what elevation. Okay. So 500 mm. Then place it. Then place it. Full stop. So here look. In this account department, suppose the client required, or as per the furniture's layout, I am placing here 1 6 ampere, another 6 ampere, here 1 6 ampere, or I can place here 2 6 ampere. Here is coming window, but elevation is how much? Only 500. It will be below the window. At this side also I want to place here 1 2. Minimum wise how much? 2. Maximum how much I can place it? At least one 16 ampere socket. So how to place the 16 ampere? As the same way. तो ये तो ड्राई एरिया है, तो कौन सा चूज करेंगे यहाँ पे? अगेन सेम डिवाइस. Either we can duplicate this also, or even standard edit type duplicate. Name as a what? 16A socket. Okay. What will make a change here? Voltage how much? 240. And the load how much? 1000 watts. Check that in the last class we have written the load on the 16 ampere socket is how much? 13 ampere, 16 ampere. The socket load might be given in the building services. Okay. So that is what 1000 watts. Then after this, what next? Label. So label, what we have to write down here? 16A. Okay. So if we do not give this label, what's happened here? Just to, if I didn't give the label, what's happened here? See. Okay. Elevation how much? Same. 500. Just place it. Can you identify it is a 6 ampere or 16 ampere? No. So that's the reason we have giving here what as a label as a what? 16A to identify it. It is 16A. It's fine. Similarly, in the library also, how we can place it? Same, this 6 ampere, get similar, place it. Suppose I want that 3 module of socket. Module here means what? Like might you have seen on the one box, we having 3 sockets. So that is what of 3 module. If you're having 10, the 10 module. Okay. The 1, 2, 3. Okay. 3. Because the library, we required a little bit more sockets. So 1, 2, 3. Even this side. 1, 2, 3. Okay. So this much. Then at least one 16 ampere socket. We're having a 116 ampere. Select it. Get similar. Place it. I'm placing in a suppose 2. That's all. What about in this washroom? How will you make a places the socket? The system tab, same device, electrical fixture. Which type of socket you will now select here? GFCI, weighted area. After that, edit type. So in the GFCI also we having 6 ampere, 16 ampere. Okay. Duplicate. What you will give the name here? 6A. Instead of giving socket, to differentiate the name, I can give here 6A GFCI. Okay. Then how much the voltage? Same, 240. It is a 6 ampere socket. So how much watts on it? 100 watts. Okay. Here GFCI in place of, we can write on 6A. So the 6 ampere socket in each and every washroom, we require one 6 ampere socket. In that silver toilet area, passage area, at least one 6 ampere both end. Then 16 ampere sockets. I can just duplicate it also only. क्योंकि ये भी GFCI है ना, इसी को duplicate कर लेंगे. Duplicate, name as a what? 16. We can save the time by doing so. Only we have to change what? Wattage how much? 1000 watts, and the label as a what? 16 ampere. Okay. So elevation how much for this wet area? 1000 to 1500 we have written. So these are all are placed at the what?
1200, तो इसे कैसे 1200 1200, ठीक है ना, 1200 1200, it's fine. So like this way we can place it any of the spaces as required. अब इन सबको पावर कहाँ से आएगा, from where will we get the power? So from for it we require the word distribution board. Next step, right now, placement of panel boards. Placement of panel boards. Placement of panel boards. Right now, system tab, electrical panel, electrical equipment. System tab, electrical panel, electrical equipment. System tab, electrical panel, electrical equipment. PP, 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 lighting and appliances panel board, 100 amps. Lighting and appliances panel board, 100 amps. Lighting and appliances panel board, 100 amps. 100 amps. Here see what is written, 208 volt, और नीचे क्या लिखा हुआ, 480 volt. Remember in the US the voltage being used how much, 3 phase as a 208 and 480 for domestic and your industries. As similarly, when you will select the lighting fixtures, can you see here we having the 120 at 277 volt single phase. So remember domestic purpose, the single phase voltage is how much, 120, and the for the commercial purpose 277. So that's it. So what you have written, electrical equipment, PP, lighting and appliances panel board, any of them, you can select it, 100 amps. Place it, I don't, place it. Place it, full stop. How to make a placement here, see? When I'm selecting, placing it on the wall, so use a space key, it will get what, on the wall. Step. Full stop. But if you select this panel board, its voltage is how much is showing you, 208 volt. If you go for edit type, it will show you that it's a voltage somewhere. Okay, voltage is not mentioned here, but it's showing in the tag here. यहाँ पे भी नहीं दिखा रहा. Yeah, here see that. Electrical data is what is showing you. Number of phases how much? 3. Means 3 phase. And the voltage is how much? 208. तो 208 volt का है, but मुझे कितना चाहिए? 415 volt. Even see, as per the distribution, what is coming here? 120 by 208y. But मुझे क्या चाहिए? 415 by 240. So when you will change the voltage, automatically it will come. But there is no option to change it. So if you do not having option to change it, what you will do then? Edit family. Right on. Next line. Select PB from drawing. PB stand for here panel board. Okay. Select PB. PB panel board from drawing. Select PB from drawing. Edit family. Edit family. इसकी एलिवेशन जो रहती है, अगर इलेक्ट्रिकल रूम में है तो इट कैन बी 800 to 1300 mm. ओके, क्या लिखे, एडिट फैमिली. Here see, when you will edit that, these are the connectors, but it is a connector for what? Conduit. If we select it, which connector it is? Conduit connector. Here you can see within the conduit connector there is a one connector. It is what as a your electrical connector. ठीक है, write down. Select electrical connector from drawing. Select electrical connector from drawing. Select electrical connector from drawing. PP voltage 415.
PP voltage 415. Power factor 0.8. PP voltage 415. Power factor 0.8. Our application menu save as family. Our application menu save as family. Our application menu save as family. Save it with a name. Save it with a name. PB-415 volt. Save it with a name PB-415 volt. Load into project and close. Load into project and close. Full stop. अच्छा, यहाँ पे अपन तो लोड करा लिए, but still it is what as a 208 volt. So what we will do then? Replace it. Go to the PP. Look for the PB-415 volt with that group. You're having the panel board list. Okay. So which ampere? 100 ampere. Select it. Now you can see the voltage how much? 415. Even see the distribution how much? 415 by 240. Automatically it will be changed here. Okay. So click in the next line. And the same step in the next point. Select replace. Replace existing PB. Select and replace existing PB. Option bar distribution system. Option bar distribution system 415 by 240. Distribution system 415 by 240. 415 by 240. PP. PP. Panel name. Panel name GF-L plus PDB. Panel name GF-L plus PDB. What it means? GF means the word ground floor. L plus PDB means lighting plus power DB, means lighting circuit and power circuit. Remember the last class we have written lighting circuit, power circuit, both will connect to the same DB. Okay. Right on. Maximum #1 pole breaker. Max #1 pole breaker equal to 36. Max #1 pole breakers equal to 36. It means that in one panel board, you can take 36 number of circuit breaker, single pole. आप देखा होगा MCB जो लगी रहती है आपको पर सर्किट वाइज, तो कितने लगा सकते हैं अपन? 36 मैक्सिमम. Means from 1 dB you can take how many number of circuits? 36 number of circuits. Okay. Next write down circuit naming by phase. Circuit naming by phase. By phase. Then tag the panel. Then tag the panel. Then tag the panel. Full stop. So how will you tag it? TG. TG. Before that, you can go forward here, free end. So it will be easy to tag it here to the outside. But the size of the tag is slightly big. I want to reduce it. How will you reduce that? Select it, edit family, then select label, edit type, duplicate, name as a what? Select to give the label. Okay, size is 2.5. I will take 1 mm. Text type as a what? Times New Roman if you want. Color I want to take as some different. Okay, okay. So all the panel having the same, expect directly load into projects. No, override the what existing version. Achha, even if I like to give it the border, I forget to give the border. Edit type. I have to give the border also. Okay. Load into projects. No, override the existing version.
ठीक है, like this one is the panel name of this one. Now from this panel we want to connect here all the points. So remember in the last class that we have seen the rules for the circuit creation. What was the lighting circuit rule? Maximum 10 points and 800 watts. Yesterday we have written that if you take one circuit from DB for the lighting as per the NEC or BIS, Bureau of Indian Standard, you can take maximum 10 points and 800 watts. Lighting circuit points are what? Light, fan, exhaust fan, doorbell, dedicated. So dedicated 6 ampere socket means even see 6 ampere socket, it is here also and even here also in the power. Same watts, but why it is being placed here? Because dedicated 6 ampere socket means the socket which we already know what type of load is going to be connect. Like in the bedroom, it is mentioned that there is a TV point. So near the TV, we have to place what as a 2 6 ampere socket at least, one for TV and one for what as a some other accessories. If it's a bed, both side of the bed we need to place what as a at least one socket for one for mobile charging, one for what as a bed lamp. अगर टेबल दिया हुआ तो वहां पे एक टेबल लैम्प के लिए एक आपको वहां पे सॉकेट चाहिए. ओके, लाइक दिस वे. So if you know that already what type of load is going to be connected, you consider as our dedicated 6 ampere socket. If you do not know after placement what type of load is going to be connected, place it another what as a light power circuit. Fine. So now, so here in this drawing, I do not know where the 6 ampere socket is going to be connected or 16 ampere. Okay, so we can take under what as a power circuit. It's fine. If you want to place the fan point, yes, we can. But if you're having the AC, so no need to have there. Okay, now. So if I like to have a connections to creating the circuits here. So what are the lighting circuit points here? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Is it, do we having any other things like exhaust fan? Lighting circuit points, we can have a ceiling fan, exhaust fan, doorbell. This type of points are not here available. It means only the light only we having. So in the one circuit, if I bring one circuit from this DB, how many number of points we can connect? 6 points, 10 points. अभी कितने points है यहाँ पे? 6 है. Each point's wattage is how much? 100. So how much total wattage? 600. As per the rule, it is correct or wrong? Correct. Maximum 10 points and 800 watts. The maximum it is less than that only. 6 points and what? 600 watts. So we are in the safe side. It means if we take one circuit, we can connect what as all of these lighting circuit points. Next step, write down. Creating circuits. Next step में लिखिए. Step number 10. 8. And step number 8. Creating circuits. Creating circuits. Write down. Select number of points of one circuit. Select number of points of one circuit. Select number of points of one circuit. So I go for your light ceiling plan. That is best. Okay. So all these points are our lighting circuit points. Select number of points of one circuit. Okay. Modify tab. Create system panel. Modify tab. Create system panel. Power. Modify tab. Create system panel. Power. Modify tab. Create system panel. Power. Under panel list, select. Under panel list, select GF-L plus PDB. GF-L plus PDB. In the panel list, select GF-L plus PDB. Full stop. तो यहाँ देखिए जैसे मैं DB select करूंगा ये dotted line दिखाता है आपको. It is all the 6 point is going to be connect to this DB. When you will hit outside again it will be vanish. So how to recheck it? So here see
When you will select this lighting fixtures, power is highlighted. Yes. But when I will select this lighting fixtures, the power will be not there. Means what? This points is already added to the what? Some panel board or to the circuits. Fine. So if you want to check it, take a mouse here, press the tab key. Left click, it will show you that, okay, it being connected. Suppose that by mistake, I have connected this point. Might be sometime by mistake we have connecting. If I want to disconnect here, same way, take a mouse here, press the word tab key, left click. Can you see the option here? We having the option edit circuit. What you want? Add or remove? I want to remove. I want to remove these 2 points. Then finish editing circuits. Now you can check. If you select it, the power is now highlighted. If you cross check it by the tab key, see, these 5 points being added, not these 2 points. Further again, if I want to add it, then so edit circuit, add circuit, which one? These 2 points. After that, finish circuit. Now check it. It is not highlighted. So take a mouse here, press the tab key, left click, it been added. Perfect. So like this way, we can what? Create the circuits of any points. Next step, step number 9. Step number 9. Electrical wiring. Electrical wiring. Again, I'm saying, just try to see 2 more 3 steps. Okay. And that step will be similar for the what every time. Other connections. Okay. What you have written? Electrical wiring. Under that, write down first one. First point, write down arc wire. Arc wire. In front of it, write down this type of wiring is used for lighting and power circuits. This type of wiring is used for lighting and power circuit. Lighting and power circuits. Full stop. Second, write down chamfered wire. Chamfered wire. Chamfered wire. In that, write down this type of wiring is used for extra low voltage, and panel to panel connection. Extra low voltage and panel to panel connection. Full stop. What is the extra low voltage type? Like your CCTV, fire alarm. So this will come under what as your extra low voltage. Fine. So wiring कैसा करना? ये देखिए, लिखिए. Next point on the same step. Third point, right? After creating circuits, take mouse near to any points. After creating circuit, take mouse near to any points. Take mouse near to any point. Press tab key, left click. Press tab key, left click. Press tab key, left click. Modify tab, arc wire. Modify tab, arc wire. Full stop. Arc wire. Can see this type of wiring is called as what? Arc wiring. Okay. And it is showing you the arrow that it is going to somewhere. So you can just drag it to inside your room. This. It is showing you the 3 line here. This 3 tick mark is showing that there's a this 1 line is showing you how much 3 number of cables. ये एक केबल कितने शो कर रहा है? वो 3 केबल्स के लिए शो कर रहा है. मींस फेज
neutral and earth cable. ठीक है, so like this way. But where it is going to connect, suppose that we having the many number of circuits, so where this points is going to connect in the panel, on the R phase, Y phase, B phase, या इलेक्ट्रिकल रूम में बहुत सारे पैनल्स रहते हैं, तो किस पैनल से ये कनेक्ट होगा, to which panel is going to be connected, so we have to give here the word tagging. Next step, wire tagging. Wire tagging. Wire tagging. Another, try down. TG, tag the wire. TG, tag the wire. TG, tag the wire. Select wire, edit family. Sorry, select tag, not wire. Select tag, edit family. Select tag, edit family. अभी यहाँ पे देखिए सिर्फ क्या आ रहा अपने को, only name is phase is coming here. I will just show you one drawing of electrical. So what is coming here, only what as a name of the phase, that is R1 phase, R2 phase, Y1 phase, Y2 phase. So I want to edit that and I need to add here what panel names. मतलब ये जो वायर है किस पैनल में कनेक्ट होगा इसका नाम बताना है. तो select tag, edit family. Edit family. Select label, edit label. Select label, edit label. Select label, edit label. Add panel. Add panel. Check break, apply OK. Check break, apply OK. Check break, apply OK. Edit type, PP edit type. Check break, apply OK. PP edit type. Duplicate. Duplicate label. Duplicate name label. OK. Change color and text size. Change color and text size. Text size. Apply OK. Apply OK. Our application menu, save as family. Our application menu, save as family. With a name, R phase tag. With a name, R phase tag. R phase tag. Load into project and close. Load into project and close. Full stop. So here see, I like to change that. Means I want to create the wire tagging such that for all the R phases, I want the R red color. For the Y phases, I want what as a yellow color, and for the B phase as a what blue color. So that's why I like to change the color as a what red, and text size as a how much? Suppose 1 mm. Give that as a what border. Okay. Okay. Then after that, our application menu, save as family. So what name will save it? R phase tag. Correct? Hai? R phase tag. Then load into project and close. So you can see that is the tag been changed? No. So कैसा change करते? Select it, replace it with a what R phase tag. Now it is clear that this R1, this circuit is connecting to what as a R1 phase, because agar 3 phase are a connection RYB. So on the R phase, it is not only one cable will connected circuit. We having the what multiple number of circuits.
On Y phase also we having the multiple number of circuit. B phase also having the multiple number of circuit. So what are the number? The R1, R2, R3, I4. That's like Y1, Y2, Y3. Okay. Which panel it is going to connect? GFL plus PDB. Information will be total. In the same way, electrical people also, they are doing the what? Getting the layout in that drawing. So just I will show you one sample drawing. See, this is a layout creations. यहाँ पे देखिए इस टाइप की वायरिंग को क्या बोलते हैं? आर्क वायरिंग. ओके. लाइट फैन इन द वन सर्किट. और ये वायरिंग है, ये सर्किट दिखा रहा किस सर्किट में कनेक्ट हो रहा है? ये R1 DB1. There will be one distribution board whose name is what? DB1. On that it is a R1 phase. As similarly you can check the another one also. It is showing here it is a B4 and B5 both circuit here. ये एक लाइन क्या शो कर रहा? दो both circuits. You see Y9 circuit or connecting on which DB? DB3. If your floor is big, instead of having ground floor L plus PDB, you can go for ground floor L plus PDB 1, 2, 3, 4 like that. Okay, are the same here. Is it fine? Now, to run this light, switch on this light, we require the what? Switches. So in Revit or even in the AutoCAD drawing also, we do not have to show the switches for the sockets or the ceiling fan, because it is default that how many number of ceiling fan, that much number of switches will be there. Whatever the number of sockets, that much number of switches will be there. But light might be different. In residential space, each and every light will having the separate switches. But in the commercial, with a one switch, you can control the number of lights here. Okay, so that's why we need to show here that whether we required one switch or for multiple switch for the lights here. So can I plan here this three light? I want to switch with a one that one switch, and this remaining three lights with a what? Another switch. Okay, right. Next step, placement of switch. Placement and connection of switch. Placement and connection of switch. This meeting is going to be ended soon, so please reconnect first. Placement of switch, right now. So switch will be placed in the which? The ceiling plan or floor plan? Obviously floor plan, right now. System tab, electrical panel device. Okay, what you have written? Placement and connection of switch, right now. System tab, electrical panel, device, lighting.
System tab, electrical panel, device, lighting, device, lighting, PP, select single pole, PP, select single pole, PP, select single pole, single pole, elevation 1000 to 1500 mm, elevation 1000 to 1500 mm, then place it, full stop. In the next line, select number of lights, from drawing, modify tab, create system panel, modify tab, create system panel, switch, modify tab, create system panel, switch. यहाँ देखिए, modify tab, create system panel, switch, hit on select switch, hit on select switch, then select required switch from drawing, then select required switch from drawing. Required switch from drawing, full stop. Okay. अच्छा, ये स्विच से ये तीनों कनेक्ट कर लिए, अब हमको चेक करना है. तो टेक माउस हियर, प्रेस द टैब की, लेफ्ट क्लिक. As similarly to this one, even if now you select it, switch option is not highlighted and not the power. It means switch is also connected and power is also connected. Can you help me to connect these 3 points? Acha, this text is disturbing this tag. What we will do? Pin it. Now, so this is all these 3 light. Then switch, select on the switch, then select the required switch. That's over. What is here? It's fine. So if you take a mouse here, press the tab key, it will show that switch. If you take mouse here, press the tab key, it will show this switch. But the wiring cannot be done. So then how will you identify? For the identification purpose, you can give the text here. How? Let's see. In annotate tab, we can remember you having the text here. So near the lighting fixtures, I will write down as a one text, small a. Size I want to reduce, edit type to as a edit duplicate 1.5 mm. 1.5 mm. Okay. 1.5. Okay. This text is here. Same text I want to copy with as a constant multiple. It's okay. Or either even you can mount it very near to each other. It's fine. Yes. And we can give the tag as the same on the switch. So what that means here, this 3 light is connecting to this is A switch. Very similarly, copy. Now we'll give the name as a what here? It's as a B. Then copy. Check as a constraint multiple with this reference.
and then bring it here. It's fine. Now it is easy to identify these 3 lights with a B switch and this 3 light with a what? A switch. Okay. So this much of things only we have to do that. Can you please help me for this room? For creating the circuit, wiring, tagging, everything for this room. First for the lighting circuit, tell me. So in the one circuit, we can add how much? 10 points. If you drag the mouse and check it, the number of points is, I think, in the filter, it will show that it is a 13. So we can't take on the one circuit. It means we have to take what as a 2 circuit. On one as a 7, another as a what? 6, like that. How will you divide? Can I take like that? This 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, this all that on one circuit. And this remaining, this big one as a what? Another circuit. Yes, we can plan like that. So we can select it like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes, no problem. 8 number of points. How much watts for this light we having? 50 watts. The 400 watts, 8 points, that is fine. How to create the circuit? Modify tab, power. Okay, the circuit being created. If you want to give the wiring here only, you can give it. Or either take a mouse here, press the what? Tab key, left click, arc wiring. It is out of the room, you can bring it inside the room, or if you can keep it here, it's fine, no problem. How to tag it? TG, tag it. Automatically it will come as a R2 L plus PDB. Next, so for this all the points we required what? Another circuit. So select the total 5 points. So how much watts for we having this? It's of 50 watts and it is of how much? 100 watts. So 100, 100, 400, 450, and the 5 points only. It's fine then. Select the total, power, L plus PDB, arc wiring, same. After that then TG, tag the wire. How much is coming here? Y1. Automatically it's connecting to the what? Y1 phase. Is it easy? As very similarly, we have to create the circuit for what? This sockets. So sockets come under what as a power circuit. So what is the rule for the power circuit? What is the rule for the power circuit? Maximum 3 points and 3000 watts. Power circuit rule is what? Maximum 3 points and 3000 watts. Look here, how many number of points do we having? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points. So for the 7 points, how many number of circuits we required? For 7 points, how many number of circuits we required? Maximum we can take 3 points only. So how much circuits we required then? 3 circuits. 3. We required what as a 3? Because 3, 3, 6, but we having 7 points here. So 3 circuits we required here. So how will you divide it? Can I take like that? This one and this two, and this one and this two on one circuit, and this as a separate one circuit. Yes, we can. So select it. 1, 2, 3. Power. Then arc wiring. As similarly. Select this one. Achha, it is clashing, so we just drag it back. This again same. Select this 1, 2, 3. Again what? Power, arc wire. Then TG, you can tag it here. It's coming in the B1. It is automatic coming to the what? Y2. Fine. So for this one as a separate one, select it. Power, arc wiring. Done. It is out of the range. Just bring it here. If you want tag it TG. Now, similarly here also, tell me. So these 3 points, one circuit, directly we can say power. If you want a wiring, yes, you can give it, otherwise leave it. Select all these 3. Arc power, ground floor S plus PDB, that's over.
Here also then same. These 3 points. What as a power? L plus PdB. Here also same. 3 points. Arc wire. Done. Then this 2 1 circuit. Yes, with 3 3 3 1 circuit, and this 2 for what as a 1 circuit. Power 1 circuit. Similarly, here also we having. How will you do that? The 1 2 3 1 2 3 1 2. Okay, so select it 1 2 3 power. Then 1 2 3 power. Similarly, this 1 and 2 last. That's all. Irrespective is 16 ampere 6 ampere socket, we can add it. So maximum but 3 points, not more than that. We can add it like this. ऐसा नहीं है ना, तो अपन एक ही डीबी ले रहे हैं जिसमें अपन लाइटिंग और पावर दोनों ऐड कर रहे हैं, है ना। तो एक जब आर फेज है तो उसी आर फेज पे लाइटिंग का भी हो सकता है, पावर का भी हो सकता है। वैसा ही वाई फेज पे लाइटिंग का भी हो सकता है, पावर का भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरह ही है वो। इज इट ओके? Now, when the load on the DB being added, then we have to create the schedule for it. Switches को फिर नहीं, switches को power नहीं, it just has a representative purpose. Okay, और बाकी जो कनेक्शन का काम है वो कौन करता है? वो साइट पर टेक्नीशियन कर लेता है वो। ठीक है, you have to just show that this switch A is going to be connect this to 3 and this remaining to this 3. Okay, so how to do the connection? That is a work for a technician, not your. No. हाँ, तो वही करने जा रहे हैं अपन लोड शेड्यूल में। कैसे वो सब आ जाता है ऑटोमेटिक, एवरीथिंग विल कम हियर ऑटोमेटिक। ओके, एक वो आपका पर्सनल रूल है, वो अपना चेक कर लीजिए। हाँ, वो आप चेक कर लीजिए। मैक्सिमम 3 सॉकेट्स, जस्ट आई फॉलो दैट, वेरी सिंपल। ठीक है, वो वैसा आप जो इलेक्ट्रिकल आप डिजाइनर है तो आपको सोचना है कि क्या करना है। ठीक है, वो आपको स्टैंडर्ड फॉलो करना है, उसका जो भी डिटेल्स स्टैंडर्ड्स हैं कि आप एक सर्किट पे 260 एम्प से ज्यादा नहीं ले सकते, है ना। एक पे एक 16 एम्प 26 एम्प से ज्यादा नहीं ले सकते। तो वो आपका पर्सनल रूल है, वो आप चेक करते रहिए उसको। ठीक है, इज इट फाइन हियर? Now, after when all the loads being added to the panel, we need to create here what as a schedule for it. Next step, right now, creating panel schedule. Creating panel schedule. Creating panel schedule. Right now, select required panel from drawing. Select required panel from drawing. Select required panel from drawing. Modify tab. Select required panel from drawing. Modify tab. Electrical panel. Modify tab. Electrical panel. Create panel schedule. Create panel schedule. Select use default template. Select use default template. Use default template. Hit on rebalance load. Hit on rebalance load. Hit on rebalance load. Full stop. Rebalance load. Full stop. So just look here. It is a schedule being created. अच्छा, schedule में देखिए क्या आ रहा है? Unit, volt ampere, ampere. I want to have here watts as a ampere, some points also. So how to change the unit? UN. In the UN electrical,
as a what? Apparent load is given what? VA, change to what? Watts, 2 decimal point. Okay. Even the currents, can you see somewhere? Current, C, nahi hai current. Conduit, illumination, current. It is in ampere, but keep as over 2 decimal point. Okay. Now, the schedule what we have created, it being shown here. Panel schedule, open here. How much watts? 6864. So you can look here. This is a default schedule. A means what here? R phase, Y phase, and it is what as a B phase. Okay. On R1 circuit, which room we are connecting? Account department for the lighting load. How much load on it? 600 watts. Similarly, R2 circuit is for what? Library 2. Library 2 का वो circuit number क्या है? R2 for the lighting. How much the load on it? 400 watts. Y1 is for the lighting only. For which room? Library 2. How much the load on it? 450. Because it is a Y1. It is a Y phase. It is a B phase. Y2, it is the account department 1 receptacle. Means what? Sockets been added. What is the load on it? On the Y phase, 300 watts. After that, adding this on the each phase, R phase, this much of loads. But the load is not balanced. Here, see, on the one phase, there is a 17 ampere, another one having the 5 ampere. So for that reason, we need to hit here what as a rebalance load. So see, how much possible it will be get rebalance. For doing this work only, electrical people, they have to work hard to do the balancing. इतना ही काम करने के लिए इलेक्ट्रिकल पीपल को बैलेंस करने में बहुत टाइम लगता है. But Revit ने क्या करा? Just hit on the rebalance load. It will balance automatic. Now see, while balancing, that circuit number being changed. Earlier, the R1 was a lighting circuit. Now it being shifted toward what as a receptacle. Yeah, ठीक है? So electrical department people also they are doing the same. We are shifting the circuit from one to the another. Correct है ना? करे थे? Load scheduling में. No. Here see this next. Circuit number will change here. First it was what as R1 circuit. Now it being changed. ठीक है ना? तो इस तरह ये replace हो जाती है total आपको. It's easy. Now, from where we'll get this low power supply to this L plus PDB? Only this one floor I am having one SMDB. इस one floor पे क्या रहेगा एक SMDB रहेगा. To that SMDB, lighting plus power DB, HVAC panel, they will come and connect. ठीक है? तो write down. And that SMDB we need to place here, and then we need to make a connections. From where? From the L plus PDB to the SMDB. That is called as what? Panel to panel connection. Give the heading. Panel to panel connection. Step number 13. Write down. Panel to panel connection. Panel to panel connection. हाँ बिल्कुल देंगे अभी पावर. अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, लेकर आते हैं अभी इसको. बिल्कुल कर सकते हैं. हाँ, सपोज दैट हियर द कलर फॉर द R6 है यहाँ पे. It is which phase? Y phase. And I want to give the color as a what? Yellow. How to change it? Select it, edit family. Go to the label, select the label, edit label, duplicate. Name as a what? अच्छा नहीं, duplicate करने की जरूरत नहीं है. डायरेक्ट चेंज करके सेव कर लेंगे अपन. As a color will be give what as a yellow. The yellow will be not display easily. So we can take this color. Okay. Okay. Now our application menu, save as, family. Name will give your what? Y phase. Y phase. Tag. Save it. Then load into project and close. Still not change. So what we'll do? Select it. PP. Replace with a what? Y phase. It is okay. अच्छा बहुत डिम देखा नजर आ रहा. तो वो तो खैर आप मजा ले लेंगे उसका, उस मसला नहीं है. एडिट टाइप.
Load into project. Do you want to save? Yes. You want to replace? Yes. Overwrite. आर के कहाँ चेंज हुई? नहीं हुई ना, आर की तो सेम है, नहीं होते, नहीं आर के तो ऑलरेडी क्रिएट करें ना, आर फेस रेड कलर, दिस इज फॉर व्हाट एज ए येलो, तो येलो देखिए आप, लाइन नहीं चेंज होते, लाइन नहीं, लाइन नहीं, इट्स ओके, आई थिंक दैट वाज अर्लियर वाज बेटर कलर, ओके ठीक है। नेक्स्ट लिखिए पैनल टू पैनल कनेक्शंस, राइट डाउन, प्लेस वन पैनल बोर्ड with a name GF-SMDB. Place one panel board with a name GF-SMDB. SMDB. GF-SMDB. Full stop. GF-SMDB. Full stop. Next line. Select GF-L plus PDB. Select GF-L plus PDB. Modify tab power. Modify tab power. Modify tab power. In the panel list, select GF-SMDB. GF-SMDB. Full stop. कैसा बताइए? How to place here the SMDB panel? Same how we have created this one, the same, you just have to change the name. System tab, electrical equipment, PB, 100 amps only, we will take it. I'll have a placement here. Then escape. How to give the name? Select it. Remember 415 by 240. The panel name as a GF-SMDB. Then here number of points, how much here? 36. Here as a circuit naming by face. Correct hai? So then after that TG, tag it. It is here GF-SMDB. Now how to connect to them? So I need to connect this L plus PDB to the what as a SMDB. So what you will select here? GF-L plus PDB. Then modify tab, power. In the panel list, which panel you want to connect? To the GF-SMDB. If I like to show the wiring, how to show the wiring? Take a mouse, press the tab key, left click. Which one? Chamfered wire. Just select it. Distance is very less, so that's why it is showing you. Or either we can move it a little bit. Move this. Now bring it to here. It's fine. So on it, it is showing you how much? 5 tick mark. Why? Because panel to panel connection is a 3-phase connection. So 3-phase, 1 neutral, 1 earth. So that's why 5 tick mark. That is a 5 cables. This one, it is showing you what as a 5 cables. If you tag it TG, it is a 3-phase connection. It will give you the name as what? RYB1 ground floor SMDB. मैं इसको कर देता हूँ R phase का. Is it okay? ये करने आना चाहिए कैसा? From where will get the power to this SMDB? To the main DB. So on the main DB will come later. Okay. Till here it is okay. Now next step, right now. Link to link Revit. Step number 14. Link to link Revit. Link to link Revit. We have to give the power supply to the what? FCU, AHU, chillers, pumps. So we can't
create the panel, we can't do the wiring, we can't do the scheduling in the what mechanical. So what we can do, we can at least bring the mechanical plant here so we can supply the power. Okay, by the help of link to link Revit. Right on under that first point. Under that first point, go to 3D view. Go to 3D view. Insert tab, link Revit. Go to 3D view. Insert tab, link Revit. Select required. Select required. Services project file. Required services project file. Example, mechanical. Example, mechanical. Example, mechanical. Full stop. क्या लिखे? Sorry. Link Revit, select required. Services file example, mechanical. Positioning auto origin to origin. Positioning auto origin to origin. Positioning auto origin to origin. Open. Full stop. Full stop. Can you help me to do the same? तो first कहाँ जाना अपने को? 3D view. Then insert tab, link Revit. I having one mechanical plan on the same architecture. Positioning what as a auto origin to origin, open. The file being linked here and the proof is here. You can see that we having the two now plan here being linked. One is what? School building revised and school build revised mechanical. But I can't see here any mechanical equipments. Reason? I can't see any mechanical equipment. That is the word VG. Full stop. In the next second point. Type VG. Type VG. So we have to go for what? We have to managing here what? Property of link file. Revit link, VG, Revit link. So where we'll go for display setting? Mechanical or revised? Mechanical. Like display setting by host view. Display setting by host view. Basic custom. Basic custom. Basics custom. Model categories custom. Model categories custom. Model categories custom. Check mechanical equipment. Check mechanical equipment. Apply OK. Apply OK. OK. 2 times OK. Now you can see the mechanical equipments. If you change the visual style, realistic. Yeah. I don't want to see these labels. What you will do? VG, annotations, labels, uncheck it. But when I'm trying to select this equipment, I'm unable to do that. Then, because these are the what as a link file. Remember in the plumbing, when you have linked that architecture file, you are not able to select what as a plumbing fixtures. How we have copied? So the same way we can copy that. Another way is how to copy that. I'm going to show you. That was a one way. Second way is here. So first of all, if I need to select it, you need to go for what? Uncheck the link because it's a link file. Now you can select. But problem is when you're going to select the one chiller, entire of the mechanical equipment is getting selected. Okay. So for copy that, remember in the link Revit, when the level was not able to select individually, what we are doing? Collaborations. So here also we have to do the collaboration. Next point, right on.
Next point, right? Collaborate tab. Copy your monitor. Collaborate tab. Copy your monitor. Collaborate tab. Copy your monitor. Select link. Copy your monitor. Select link. Select link file. Select mechanical link file from drawing. Select mechanical link file from drawing. Select mechanical link file from drawing. So how will you identify whether it's a mechanical link or which one? You see, if you take mouse near to the wall, what is the name on the display is appearing? School building revised. But when you take mouse near to the chiller, what the name is appearing? School building revised MECH. Okay. Select. Say the require. Select the what? Mechanical link file from drawing. Copy. Copy. Check multiple. Copy. Check multiple. Check all the mechanical equipment from drawing. Check all the mechanical equipment from drawing. Check all mechanical equipment from drawing with help of filter. With help of filter. Option bar, finish. Option bar, finish. Option bar, finish. Copy your monitor tab, finish. Copy your monitor tab, finish. Copy your monitor tab, finish. Full stop. So here see. How will you check that only mechanical is selected? You can go for filter. Here also we having the filter. Only mechanical equipment being selected. First we have to finish here in the what? Option bar. Then next, copy your monitor tab, finish. Now you can select the what? Still, I'm not able to select it. What is the reason? Copy is over. Full stop. In the next line, I know again. Type VG. Type VG. Model categories. Check mechanical equipment. Type VG. Model categories. Check mechanical equipment. Okay. Type VG. Model categories. Check mechanical equipment. Okay. Full stop. Here look the difference. What's happening? हेलो Yes. सर कितने बजे तक चलेगी क्लास 1:30. So if I select this, I'm unable to do that because your file is copied, but we have checked the mechanical equipment visibility in the link file. So that's why link file is visible. But current file visibility, we didn't have check it here. We have checked for what? Link file, that is visible. But current file visibility, we didn't have check it. So mechanical equipment, now it will be visible. It means if you move it, suppose from its position, if I'm just moving it as some fixed distance as some 10 feet. So it is a pinned element. No. Yes. Can see two chillers. Why it is so? Because one is what? Link file and one is your what? Current file. Okay. Remember in the plumbing also we have done the same. So how to hide it? So VG, where you will hide it? In here or here? Revit link. If you hide from here, the current file will get hidden. You have to go forward, Revit link, display setting, model categories, mechanical equipment, uncheck it.
It's okay. Like this. It's fine. Now, to the every equipments, we need to supply the power. Even if I'm going to that, because FCU is what? Above the false ceiling. FCU is your above the false ceiling. It is not visible here. Then what we'll do? Already we in the VG we have check it. Then still it is not visible here. View range. Remember, the VG is used to only control the visibility of current window, not for the whole project. It is only control what as a for the what? Current project, current view, not for the whole project. So that's why individually we have to switch on. So VG, what we have to check here? Same, mechanical equipment. Okay. Why the duct is not visible? Same here in the VG. Here the duct is not checked. Duct accessories, fitting, insert, these are not checked. If you want to see the duct, check the duct. Fitting is not visible then. So do you want to supply the power to the duct? No. So no need to have. And if I'm select this FCU, PP edit type, how much the voltage for this? 120 volt. And it is a number of pole is given how much? 1. It is means what? It is a single phase. Number of pole means what? One single phase. So single phase voltage how much? 240. It is showing you how much? 120. So we need to change the voltage. So what will give you the voltage? 240. Okay. If your voltage is not matching with your panel, it will not connect. So let us try that. This I'm Control Z. So I'm doing Control Z, edit type. Okay. Changing to same as what? 120. Let's see what's happened. So how to supply them power? So we need to place one HVAC panel. To that HVAC panel, we'll connect all the what? FC for the one floor. Next point, next step. Yeah, and the next same step in the next point, right on. Create one HVAC panel. Create one panel, not HVAC panel. Create one panel with a name GF-HVAC. Meeting is going to be ended within 1 minute. So please reconnect for just only 10 minutes. Just 10 minutes में end जाता. So only connect for the 10 minutes, okay? What you have written? Create one panel with a name GF-HVAC, okay? Then add FCUs, then add FCUs to this panel individually. Then add FCU to this panel individually. Full stop. How will you add it? The first I like to place the what? One panel. Select this. Create similar. I like to place it here. ये बता रहा हूँ अभी कितना. समय 10 मिनट में सिर्फ एफसी को कनेक्ट करके छोड़ दे दूंगा. ये सब दोनों पैनल जाते करेक्ट. नहीं तो 3 फेज तो आता है इस केबल. एक फेज सिंगल है तो सिंगल ही हो जाता है. Now look here. I just place here one panel. I want to change its name. How to change it? Select it. PP. Name as a what? GF-HVAC. Yes. GF-HVAC. Then circuit naming by
phase. That's it. Then TG, tag it. After that, so everything is okay. Even if I'm selecting it, if I'm selecting this, going to the power, here it's showing me the name HVAC panel, isn't that? It's showing me the panel. But when I'm selecting here the FCU, power, it's not showing me any panel list. Why? Because there is only one reason, that the voltage of this FCU and the panel is not matching. So whenever it's happened, it means your voltage is there is some difference. So select it, change the voltage of it. How much? 240. Okay. But now here see, if I'm selecting this FCU, that option for the power is not active. But if I'm selecting to this FCU, the option for power is active. And you can add to the what? HVAC. If you want to do the arc wiring, do the arc wiring. Then what about this one? What's happening when you are selecting and hitting on the power, the circuit being created, but panel is not defined. So for that, take a mouse here, press the tab key, left click. See, again it will be active. Just define it what as a HVAC panel. That is all. Then if you want to do the arc wiring, tab key, left click, arc wiring. बिल्कुल TG, tag it. ठीक है, so just I will add the load. So select it, power, HVAC. Select this, power, HVAC. This one. Select this, power, HVAC. So this one, select it, power, HVAC. Next, here also, select it, power, HVAC. If you do the wiring, you can do that, power, HVAC. Now, this one also, select it, power, but HVAC is not coming in the list. It means same, the voltage is different. Select it, edit type. Voltage how much? 240. What's happened with it? Although one have been changed, the voltage, but why it is not changed? If you select this FCU, it says what group? 800 CFM. These all are the what of one group, 800 CFM. But when you will select it, it is a what of 600 CFM. So remember, in the parameters we have discussed, the value in the edit type property will be applied for what? Whole of the group. Okay, so that's why. Now again, the power is not active. Then what you will do? Take a mouse here, press the tab key, left click, then the panel list as a what? HVAC panel. After adding the loads to the panel, what we will do next? Create the panel schedule. So select first panel, create panel schedule, use default template. You will having the panel schedule. Hit on the what? Rebalance load. You will get the load balanced. Achha, one thing here, see, when we have selected this HVAC panel of which ampere? 100 ampere. What the schedule is showing, that what is the load on this panel? 3.43. It's okay. We can add up to 100 ampere. That's fine. And similarly, when I'm selecting here L plus PDB, load on it is how much? 12.23. What panel range size we have select here? 100 amps. It is then fine. If that load is increasing greater than 100 amps, then you can replace with a what? Another one, 225. Is it okay? Now, if the schedule is created, from where the power will get to this HVAC panel? From this SMDB. So how will add it? That is a panel to panel connection. So select the what? HVAC panel, then power to which panel? SMDB. That's over. Okay. So this, even after completing the connection to the panel, all the DBs, we have to create the schedule for it also. So select it, create panel schedule, use default template, panel being created, hit on the rebalance load, load will get balanced. How much the load on it is coming? 15.19. What is the panel volt range? 100 amps. It's fine there.
Is it okay? From where we'll get the power to this SMDB? Main DB. So like this way, we have to do for each and every floors. Okay. So we'll stop here today with this. Inshallah, tomorrow we'll see the transformer connection and MDB placement. We having the chiller on the what? Rooftop. Pumps. इन सबको पावर सप्लाई देना है. तो चिल्लर के लिए चिल्लर पैनल्स रहते हैं और आपको पंप्स के लिए एक अलग पैनल रहता है जिसको बोलते हैं अपन MCC, मोटर कंट्रोल सेंटर. ओके. ये दो पैनल क्रिएट करना है रूफ पे, कनेक्शन करके फिर उसको केबल कहाँ पे आएगा? वो MDB को. ठीक है. तो बताइए कैसा क्रिएट करते हैं पैनल? तो आई लाइक टू गो फॉर द व्हाट? रूफ लेवल. रूफ लेवल पे मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, तो देखने के लिए क्या करना? VG. In VG model, sorry, in the model category is mechanical equipment. You have, ठीक है. अपनी पोजीशन से ये चले गया. This one, this one. The three chillers are here. Two primary, two secondary. तो एक वर्किंग और एक स्टैंड बाई है. तो वैसा ही नहीं, इसमें दो वर्किंग है और एक इसमें सेकेंडरी में एक स्टैंड बाई है. क्योंकि दो अगर चिलर वर्क कर रहा है तो कितने प्राइमरी चाहिए? दो प्राइमरी चाहिए. और दो अगर सेकेंडरी है तो एक स्टैंड बाई और एक वर्किंग है. तीन चिलर में दो वर्किंग और एक स्टैंड बाई है. हाँ, और रहता मत नहीं है यहाँ पे फिलहाल. यहाँ पे देखिए वोल्टेज कितना है इसका? 208. और इधर एडिट टाइप कितना वोल्टेज है? 208. कितना वोल्टेज रहना? 240. 240 कब लेते? जब अपन सिंगल पोल है, मतलब सिंगल फेज का है. यहाँ देखिए नंबर ऑफ पोल कितना दे रहा? 3. तो 3 पोल में कितना फेज आता? तो 415 इवन. अब जब इस कनेक्टर को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ देखिए कहीं पे दिख रहा है #3. मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ. आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो बाद में आपको #3 दिखाई देंगे. तो #3 का मतलब ये होता है दैट इज व्हाट? 3 पोल. तो 3 पोल मीन्स 3 फेज है. तो सबकी वोल्टेज पहले चेंज करनी है. तो कैसा चेंज करेंगे? तो सेलेक्ट इट, PP एडिट टाइप, वोल्टेज एज ए हाउ मच? बोलिए. 415 वोल्ट. देन चिलर का भी क्या करेंगे? सेलेक्ट, PP एडिट टाइप, वोल्टेज एज ए हाउ मच? 415 वोल्ट. क्यों? क्योंकि 3 पोल है, 3 फेज के लिए. ओके. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप में लिखिए. इन द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 14, 15, step number 15, right now. Create chiller and MCC panel. Create chiller and MCC panel. Then change the voltage of chiller and FCU. Sorry, chiller and pumps. Change the voltage for chiller and pumps. ब्रैकेट में लिख सकते हैं 415 वोल्ट. तो एक रेफरेंस रहता है याद, 415 वोल्ट. फुल स्टॉप. नेक्स्ट पॉइंट, नेवर ऐड. हाँ, उसी में सेम स्टेप में नेक्स्ट पॉइंट में लिखे नेवर ऐड स्टैंड बाय लोड. नेवर ऐड स्टैंड बाय लोड to the panel. Never add a standby load to the panel. Full stop. इसका क्या मतलब हुआ? अगर मान लीजिए पैनल है, अपन अगर तीनों चिल्लर की लोड को ऐड कर दिए, इसका मतलब कि तीनों वर्क कर रहा है. बट अपना वर्क कितना करेगा? 2 ही करेगा हमेशा. एक तो स्टैंड बाई रहेगा. तो अननेसेसरी अगर अपन स्टैंड बाई को ऐड कर दिए तो पावर लोड बढ़ जाता. तो वैसे क्या होगा? केबल साइज बढ़ जाएगा, देन ट्रांसफार्मर की साइज बढ़ जाएंगी आपको. तो अननेसेसरी क्यों बढ़ाना? तो स्टैंड बाई की लोड को कभी भी ऐड नहीं करना है. ठीक है. फुल स्टॉप. तो बताइए कैसे क्रिएट करेंगे अपन? तो इस फ्लोर पे कहीं पे आपको इलेक्ट्रिकल रूम दिख रहा? नहीं. पैनल बोर्ड अपन बाहर रख सकते हैं, बारिश हुई तो फिर. ओके. तो यहाँ पे नहीं रख सकते, तो क्या करेंगे अपन? नीचे वाले फ्लोर पे, सेकेंड फ्लोर पे इलेक्ट्रिकल रूम है ना,
तो इसके और भी पैनल्स रहते हैं, SMDB, HVAC, L+PDB। इसके अलावा मैं यहाँ पे 2 पैनल और प्लेस कर रहा हूँ एज वर्ड चिल्लर एंड पंप, MCC। तो कैसा? सिस्टम टैब, मैकेनिकल इक्विपमेंट, PP, ऑलरेडी 100 एम्स है, तो पहले अपन 100 एम्स को प्लेस करेंगे। शेड्यूल आने के बाद अगर चेंज हो रहा है तो चेंज कर देंगे। तो ऑन द वॉल जस्ट प्लेस। अच्छा, ये टैग डिस्टर्ब कर रहा है तो क्या करेंगे? बोलिए। हाँ, VG, एनोटेशन कैटेगरीज, नेक्स्ट स्पेस टैग्स। ठीक। अनदर वन आल्सो, द kit similar behind it. यस सर। सबका नाम चेंज करना है, कैसा करते हैं? Select it, then check the voltage range, panel name as a what? Chiller, by name as a what? By face. Select it. Next name as a what? MCC. MCC stand for Motor Control Center. Then tag it TG. Keep as a free end. It is what here? MCC. नेक्स्ट, अब इसे लोड कनेक्ट करें तो लोड कहाँ पे? रूफ पे। कैसा कनेक्ट करेंगे? तो सेलेक्ट द चिल्लर, बिना पैरामीटर बनाए। किसकी? तो जरूरी नहीं है ना, पैरामीटर तो है ना ऑलरेडी, सिस्टम पैरामीटर भी तो होगा ना। अब मुझे इसे टैग ऐड करना है किसमें अपने को? टू द व्हाट? पैनल। तो सेलेक्ट द व्हाट? चिल्लर, देन पावर, आफ्टर दैट पैनल नेम, विच पैनल यू विल कनेक्ट? चिल्लर पैनल। अगर वायरिंग करना है तो टेक अ माउस, प्रेस द टैब की, लेफ्ट क्लिक, आर्क वायर। कैन यू सी दैट जो पहले अपन करे सेम चीज रिपीट हो रहा है बार बार? अगर आप इवन अगर प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको एहसास हुआ होगा, सब कुछ क्या है? रिपीटेशन है एवरी टाइम। अगेन टू दिस वन, सेलेक्ट इट, पावर, चिल्लर, आर्क वायर, दैट्स ऑल। ये अपने हद से बाहर है तो इसको अपने हद में ला लेंगे। बट ये किधर जा रहा है ये नहीं मालूम, तो क्या करेंगे? TG, वायर टैग। ठीक है, इसको ऐड नहीं करना है तो क्या करेंगे अपन? इसको जस्ट एक टैग दे देंगे। अब इसकी टैग नहीं दिखा रही अपने को, क्यों? क्योंकि अपन अब किस टेम्पलेट में, सॉरी, वर्क कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल में। तो इसकी टैग लोडेड नहीं है, तो अपन जैसे हिट करेंगे तो ये पूछेगा किधर है टैग आपका। जब अपन मैकेनिकल में वर्क करें तो डायरेक्टली टैग आ जा रहा था, बट यहाँ पे नहीं आएंगे। तो यहाँ पे करेंगे यस लोड। तो इट विल बी लोड फ्रॉम वेयर? US मेट्रिक। गो फॉर हियर एनोटेशंस। किस टाइप के एनोटेशन चाहिए? तो मैकेनिकल। किसके लिए चाहिए? तो मैकेनिकल इक्विपमेंट टैग। अब इसके क्या करना है? एच को सिलेक्ट कीजिए, चिल्लर को। यहाँ पे देखिए मार्क आ रहा है 23। चेंज कर देंगे यहाँ पे, इट इज व्हाट? स्टैंड, ताकि पहचान में आता है इसकी लोड एडेड नहीं है। अभी इसकी बॉक्स से बाहर जा रहा है तो क्या करेंगे? एडिट फैमिली, इसके बॉक्स को डिलीट कर देंगे। ठीक है, लोड इनटू प्रोजेक्ट, नो, ओवरराइड द एग्जिस्टिंग वर्जन। ये स्टैंड बाय हो गया। सिमिलरली टू द पंप ऑल्सो। तो दिस टू इज वर्किंग बिकॉज टू चिलर इज वर्किंग। तो प्राइमरी पंप, तो सेलेक्ट इट, देन पावर। इधर किधर कनेक्ट होगा ये? MCC। ये भी कनेक्ट होगा किधर? सेलेक्ट इट, पावर, MCC, आर्क वायर। इसके भी पास माउस लेफ्ट क्लिक, आर्क वायर, सॉरी।
देन अगेन टेक हियर, प्रेस टाइप की, लेफ्ट क्लिक, आर्क वायर। इसमें क्या एक वर्किंग और एक स्टैंड बाई, तो क्या करेंगे अपन, एक को मार्क कर लेंगे, इट इज योर व्हाट, स्टैंड बाई, सेलेक्ट इट, गिव इट द नेम एज अ व्हाट, स्टैंड बाई, देन सेलेक्ट इट, पावर, एमसीसी, आर्क वायर, टैग कीजिए टीजी, ठीक है। तो ऑल द लोड्स टू देयर पैनल चिल्ड्रन इज एडेड, तो जैसे लोड ऐड कर लेंगे क्या करना है अपन को, शेड्यूल निकालना है। ओके, इवन शेड्यूल निकालने के बाद भी ऐड करें तो कोई बात नहीं, ऑटोमेटिक उसमें ऐड हो जाता है वो। तो सेलेक्ट द चिल्ड्रन, देन गेट पैनल शेड्यूल, यूज डिफॉल्ट टेम्पलेट। तब ये 3 फेज लोड है, तो इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी परफेक्टली बैलेंस लोड रहता है। तो देखिए 254 254 254, इस पे देखिए लोड कितना आ रहा, 254 एम्पेयर, बट अपने पैनल कितने साइज का लिए अपन, 100 एम्पेयर। तो अब क्या करेंगे, सेलेक्ट करके इसको रिप्लेस कर देंगे 400, दैट्स इट। अभी कितने एम्पेयर का होगा ये, 400 एम्पेयर का होंगे। इसे सेलेक्ट कीजिए, अगेन इसकी शेड्यूल क्रिएट कीजिए, क्रिएट शेड्यूल, यूज डिफॉल्ट टेम्पलेट। ये भी 3 फेज लोड है तो ये भी परफेक्टली बैलेंस्ड है। कितना लोड है इस पे, 56 पॉइंट, तो 100 एम्प्स है तो इनफ है, करेक्ट, दैट्स इट। नाउ अब इन सबको पावर सप्लाई कहाँ से आएगा, एमडीबी से। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्टेप राइट डाउन, या उसी में लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, क्रिएट वन पैनल विथ अ नेम एमडीबी, create one panel with a name MDB, then with help of panel to panel connection, then with help of panel to panel connection, add all SMDB, add all SMDBs to it, all SMDBs to it, full stop। ठीक, तो तो एमडीबी कहाँ पे क्रिएट करेंगे, ग्राउंड फ्लोर पे। मैं यहाँ पे एमडीबी प्लेस करना चाह रहा हूँ, कैसा प्लेस करेंगे बताइए, बोलिए। ऑलरेडी पैनल है ना ये, गेट सिमिलर, तो कितने एम्पेयर का लेंगे, चिलर अपना कितना है, 400 एम्पेयर का है, तो कम से कम उतना तो रहता ही ये, बाद में देखेंगे शेड्यूल के बाद अपन चेंज कर लेंगे ऑन द वॉल। ठीक है, इसके नेम कैसा चेंज करते हैं, सेलेक्ट इट, ऑलवेज चेक व्हाट एज ए डिस्ट्रीब्यूशन, देन पैनल नेम एज अ व्हाट, एमडीबी, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। यहाँ पे क्या देना है, 36, एंड सर्किट नेमिंग बाई फेस, देन टीजी, टैग इट, परफेक्ट। नाउ पैनल टू पैनल कनेक्शन, तो इस एसएमडीबी में एचवीएसी और एलडीबी एडेड है, और एसएमडीबी का पावर कहाँ से आएगा, एमडीबी से। तो सेलेक्ट दैट एसएमडीबी, पावर टू विच पैनल, एमडीबी। सिमिलरली हर फ्लोर पे जाके उसके एसएमडीबी को किस में ऐड करना है, टू द एमडीबी। सिमिलरली चिल्लर एंड एमसीसी आल्सो कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ एसएमडीबी, तो क्या करेंगे अपन, सिलेक्ट द चिल्लर पैनल, पावर किधर जाएगा वो, एमडीबी। इफ यू वांट टू शो द टैग, यस यू कैन शो इट, अगेन सेलेक्ट इट, पावर, एमडीबी, आर्क, देन टैग कर लीजिए, पहचान में आ जाता है।
ठीक है ना। अब ये एमडीबी को पावर कहां से आएगा, ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट स्टेप, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मर। स्टेप नंबर 16, selection and placement of transformer. Selection and placement of transformer. तो आएंगे उस पे, देखिए selection and placement of transformer, right on first point, under that first point में लिखिए selection of transformer is based on total estimated load. Selection of transformer is based on total estimated load, in the bracket write down TEL, शॉर्टकट क्या है उसका, TEL, total estimated load, bracket close, followed by 15% of design margin, 15% of design margin, and the efficiency of 95% to 99%, and the efficiency of 95% to 99%. Full stop. Continue write down the actual capacity. Second point में लिख लीजिए. The actual capacity of transformer should be calculated such that the actual capacity of transformer should be calculated such that the actual capacity of transformer should be selected such that load on it must be not greater than 70% to 80%. 70% to 80%. Next point, उसी में next point लिखें. Firstly, ly, firstly, comma, create schedule for MDB, note down TEL in kilowatts, TEL in kilowatts, full stop. बताइए कैसा निकालेंगे पैनल शेड्यूल फॉर MDB. तो select that MDB, then get panel schedule, use default template. इसको बैलेंस करने की जरूरत है, क्यों? हाँ, 80% ऐड कर देना. नहीं, थ्री फेज ये इक्विपमेंट थोड़ी है कि थ्री फेज है. ये इसलिए कि जितने पैनल्स आ रहे हैं ना वो सब बैलेंस होके आ रहे हैं, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है. सभी पैनल्स क्या आ रहे हैं, बैलेंस होके आ रहे हैं ना, तो बैलेंस, इसको बैलेंस करने की क्या जरूरत है, नहीं है. ओके ना, इस पे देखिए लोड कितना आ रहा, 324. अपन कितने एम्पेयर का पैनल लिए, 400. परफेक्ट है ना. फ्रॉम हियर वी हैव टू नोट डाउन व्हाट एज ए टोटल एस्टिमेटेड डिमांड, दैट इज अ TEL. तो यहाँ देखिए टोटल एस्टिमेटेड डिमांड इज हाउ मच, 233,510.1.6 वैट्स. तो किलो वैट्स में कितना होता है ये, 233.5. तो कैन आई राइट ऑन 234? यस. तो लिखिए TEL is equal to, लिखिए, that is TEL is equal to 234 kilowatts. That is TEL is equal to 234 kilowatts. Selection में क्या लिखे, the selection of transformer is based on total estimated demand TEL. फर्स्ट पॉइंट वही लिखे थे ट्रांसफार्मर के लिए, followed by
15% of design margin, that is nothing but as a future load or as a safety factor. So adding 15% of डिजाइन मार्जिन, तो टीएल कितना हो जाता? टीएल इज इक्वल टू 15% ऐड करना है तो 1.15 इंटू 234 कितना आएगा ये? 269.1 kilowatts. Then after getting the total estimated demand, the transformer capacity, TFR means transformer capacity, is equal to kilowatts value upon cos phi power factor into eta efficiency. तो kilowatts की वैल्यू कितनी है? 269.1 अपॉन cos phi का कितना लेते हैं? 0.8. efficiency कितना लेना है? 95 to 99, तो अपन 99 ही लेंगे, 0.99. आंसर बताइए कितना? क्या बोलेगी? 3.39. ऐसा कैसे आता? 3.39 से केवीए से सिर्फ आपका एक फ्लैट चल सकता है बस. सर 339.77। हाँ बिल्कुल 339 पॉइंट. ठीक है, शाम में मिलो। शाम में किससे मिलते हैं जी? माइक ऑफ रखिए. 339.7 77। दिस मच ऑफ किलो वोल्ट एम्पर केवीए. तो अगर मैं इस पे ट्रांसफार्मर की साइजिंग कर दिया तो ट्रांसफार्मर पे हमेशा कितना लोड चला रहेगा? 100% ऑफ लोड. अगर मैं 339 पे ट्रांसफार्मर की साइज कर दिया तो जब पावर कनेक्ट होगा तो क्या होगा? हमेशा क्या रहेगा? ट्रांसफार्मर के ऊपर 100% लोड रहेगा. तो बट ट्रांसफार्मर ऐसी साइज करनी है थोड़ा सा बढ़ के, ताकि उस पर लोड जो है 70 to 80% ज्यादा नहीं होना. क्योंकि जब जैसे लोड कनेक्ट होगा बिल्डिंग पे, वो तो इतना लेके रहेगा कैसे भी. आप क्या करेंगे? आप अपने ट्रांसफर की साइज ओवर कर दीजिए तो लोड कितना हो जाएगा? 70 to 80%. कैसा उसको निकालेंगे बताइए? The actual capacity should be such that load on the transformer they will never greater than how much? 70 to 80%. तो actual capacity is equal to जो भी रेटिंग आई ना कैलकुलेटेड केवीए, उसको डिवाइड कर देना है 80% से. 70 to 80%. तो कितना केवी आया कैलकुलेटेड? 339.77 डिवाइड बाय 0.8 कितना आएगा ये? तो मैं यहाँ पे इसको 0.8 नहीं 80% ले देता हूँ. 70 to 80%. तो 0.8 कितना आ रहा है? कितना? सर 4174। 427. सर तो 424 का ट्रांसफार्मर नहीं आता. नेक्स्ट जो साइज रहता है वो डायरेक्टली लिखिए. 1 पॉइंट कहाँ से आया? वो 15% ऐड करे ना डिजाइन मार्जिन.
टैग कर देंगे। कहाँ पे चेक करना होगा? नहीं तो HVAC वाले आपको देते ना टैगिंग उसका। तो कोई भी एक स्टैंड बाय रहेगा ही। अब ये तो जरूरी, अब मान लीजिए कभी वो चलने लगेगा दूसरा बंद हो जाएगा, आप किसी एक को स्टैंड बाय कंसिडर करके आप टैग कर, उसमें बस आपको क्या करना, टैग दे देना कि ये स्टैंड बाय मैं कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है। पाइपिंग सब कुछ सबका रहता, पाइपिंग क्या रहता, पंप कनेक्शंस रहते, वायरिंग वगैरह सबकी रहती, बट लोड ऐड नहीं करना है बस। ठीक है, होंगे। नेक्स्ट पॉइंट राइट। सिस्टम टैब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, सिस्टम टैब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, लोड फैमिली US metric, electrical equipment, load family US metric, load family US metric, electrical MEP, electrical MEP, electric power, electric power, generation and transformation, generation and transformation, select wet type transformer, select wet type transformer, open, open, PP, open, PP, select 500 kVA, open PP, 500 kVA, place it, 500 kVA, place it, full stop. In the next point, select transformer from drawing, select transformer from drawing, PP edit type, PP edit type, primary voltage 11 kV, primary voltage 11 kV। तो ट्रांसफॉर्मर की इनपुट साइड को क्या बोलते हैं? प्राइमरी। तो प्राइमरी वोल्टेज 11 kV। ओके। ऑप्शन बार डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ऑप्शन बार डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 11 by 0.415 kV, ऑप्शन बार डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 11 by 0.415 kV। ये देखिए 11 by 0.415 kV। PP under electrical loads, PP under electrical loads, secondary distribution under electrical loads, secondary distribution system,
क्या लिखे अपन? अंडर इलेक्ट्रिकल लोड्स सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 415 by 240 volt, 415 by 240 volt. Panel name transformer, at the rate of 500 kVA. Transformer at the rate of 500 kVA. Circuit naming by phase. Circuit naming by phase. Then tag it by phase. Then tag it. Then tag it. You see what is written? Transformer, it is at the rate of how much kVA? 500 kVA. बट ये ट्रांसफॉर्मर को नीचे तो नहीं रखेंगे अपन, इसके लिए क्या चाहिए? प्लिंथ चाहिए। प्लिंथ जो था मैंने डिलीट कर दिया, मतलब HVAC इलेक्ट्रिकल का, सॉरी प्लम्बिंग का बनाने का है प्लिंथ। बताइए कैसा बनाएंगे? किधर है क्रिएट टैब? न्यू, फैमिलीज, अंडर किस कैटेगरी में जाएंगे? हाँ अपन इलेक्ट्रिकल में है ना, तो इलेक्ट्रिकल क्रिएट कर लेंगे, इलेक्ट्रिकल फिक्सचर, ठीक है, या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। हाँ जेनेरिक में करेंगे तो सबका साथ सबका विकास हो जाएगा, फिर कहीं पे भी यूज कर सकते हैं बिल्कुल। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आगे। नेक्स्ट, डायरेक्ट एक्सट्रूजन कैसा? हाँ न्यू, साइज देंगे अपन कितना, कुछ तो भी दे देंगे, 1000 mm बाई 500 mm बाई 400 mm, ठीक है ना? आपकी मर्जी जो से दे सकते हैं, क्योंकि बाद में कैसा भी अपन चेंज कर ही लेंगे। न्यू पैरामीटर किसके लिए क्रिएट करेंगे? लेंथ, ओके अच्छा इंस्टेंट कर लेंगे, बेटर है इंस्टेंस। देन नेक्स्ट, width, width instance. Then what? Height, height. Next, material. इसको टाइप रहने देंगे। Next, hit on it. कैसा चेंज करते हैं मटेरियल? राइट क्लिक, डुप्लीकेट, नेम, प्लिंथ, अप्लाई होगा, अगेन हिट ऑन 3 डॉट्स। कलर चेंज करनी है तो यहाँ से कीजिए, मटेरियल चेंजेस फ्रॉम हियर, concrete. There's a different types of concrete. I like to go for this one. Apply, okay. साइजेस भी देना है ना, कितना? लेंथ 1000, width 500, height 400. Then next, reference plane. Next, DI equal then first to last. Then over that we can do extrusion, or either we can go for first plane, reference plane. अच्छा इसकी लेवल डिफाइन कर देंगे, what as it is, height. ये क्या ले लेंगे अपन? width. ये क्या होगा? length. Then create type extrusion
rectangle. After that, lock the dimensions. Finish edit mode. Front elevation. Drag it up to, सॉरी अच्छा वो डायमेंशन लॉक नहीं करे, फिर से डाउन कर लेंगे, फिर दोबारा जाएंगे. Done. Select it. Hit on the box. Check as a what material. Change the realistic view. You can change that material. After that, our application menu save as family. The electrical as a what. Load into project and close. तो ट्रांसफॉर्मर को अपन प्लेन पे रखेंगे ऑन द ग्राउंड फ्लोर. तो ट्रांसफॉर्मर की लेंथ और विड्थ चेक कर लेते कितना DI कितना है इसका 2000 रख लेंगे अपन 2000 और ये कितना 1500 है ना. टेक एज ए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट. अच्छा वो सिलेक्ट नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे HH हाइट कितना ये 2000 दिस वन 1500 हाइट कितना एक कम से कम 6 फीट पे प्लेस करेंगे लेंथ हाइट पे तो 6 फीट तो ये भी 2000 करेक्ट है. HR तो इसकी ऑफसेट कितना देंगे बोलिए इसकी ऑफसेट कितना 2000 ठीक है. इस तरह ये प्लेन पे आके बैठ गया. नाउ सिमिलरली we need to place a one DG set diesel generator. Right. Next step placement of diesel generator. Placement of diesel generator. Placement of diesel generator. Another try down. Another try down. Selection of DG set. Selection of DG set is based on. Selection of DG set is based on total estimated demand of the building. Total estimated demand of the building. Followed by standard rating. Followed by standard rating. Full stop. लिखिए TEL is equal to TEL equal to कितना था 234 kilowatts right on. TEL is equal to 234 kilowatts. इसको राउंड अप कीजिए. Therefore DG set capacity equal to DG set capacity equal to 250 kilowatts. Therefore DG set capacity equal to 250 kilowatts. Full stop. Next point लिखें. System tab. Electrical equipment. Load family. System tab. Electrical equipment. Load family. Generation and transformation. Generation and transformation. Generation and transformation. Select
डीजल इमरजेंसी पावर जनरेटर, select diesel emergency power generator. PP, PP। अच्छा ये बताइए, ये जनरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पे रहता है? ये डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख लिया, तो ये कहाँ पे? इलेक्ट्रिकल, अंडर दैट MEP, अंडर दैट व्हाट एज इलेक्ट्रिक पावर, देन अंडर दैट ओके। जैसे मैंने से ओपन PP, सेलेक्ट 300 kilowatts, PP select 300 kilowatts, edit type duplicate, PP select 300 kilowatts, edit type duplicate, name as DG, name as DG at the rate of 250 kilowatts, name as DG at the rate of 250 kilowatts. Okay. Alternator voltage कितना लिखेंगे? अल्टरनेटर वोल्टेज 415 वोल्ट, ठीक है। मतलब डीजल जनरेटर का जो अल्टरनेटर है वहां से कितना वोल्टेज चाहिए आपको? 415 वोल्ट, अल्टरनेटर वोल्टेज 415 वोल्ट। ओके, then place it, then place it। तो मैं यहाँ पे आके इसको प्लेस कर रहा हूँ। ये भी किस पे प्लेस होगा? प्लेन पे आएगा। ओके, तो कितना देंगे अपन इसका ऑफसेट? सपोज 300 mm। नीचे मुझे प्लेन चाहिए, तो सेम प्लेन, क्रिएट सिमिलर। इसकी विड्थ लेंथ तो करेक्ट है, विड्थ चेक करते कितना DI 3600, 3600। थोड़ा सा और बढ़ लेते हैं, 3700। हाइट कितना? 300 mm। लुक इन 3D व्यू, ये ऐसे बॉक्स दिख रहा है, अब इसको फाइन करेंगे, तो ठीक है। डिज ना, अब इन दोनों को किससे कनेक्ट करने का अपने को? MDB से। तो मैं ट्रांसफार्मर को डायरेक्ट कनेक्ट कर दूं और DG सेट को भी डायरेक्ट कनेक्ट कर दूं, तो मसला नहीं होता? बिल्कुल होता। मान लीजिए इसकी पावर चली गई हुई है, इसकी पावर आ रही, सडनली इसकी पावर आ गई, तो गया फिर। तो क्या करेंगे इसके लिए? आपको याद होगा अपने दुकानों वगैरह में या घरों में देखे होंगे, चेंज ओवर रहता, चेंजर होता है ना, चेंजर करते हैं अपन, DG सेट टू, है ना, चेंजर। इवन इस बिल्डिंग में नीचे जाएंगे तो है चेंजर रखा हुआ। हम्म। तो यहाँ पे वो मैनुअल चेंजर है, बिल्डिंग में आपको ऑटोमेटिक रहता है। हर इस बिल्डिंग में ऑटोमेटिक चेंज, दैट ऑटोमेटिक ट्रांसफर स्विच, ATS, ठीक है। उसे प्लेस करना है और दोनों को कनेक्ट करना है, देन MDB को कनेक्ट होंगे। तो ATS का काम ये रहता, अगर ट्रांसफार्मर की पावर हो रही तो स्विच उस तरफ हो जाता है, और अगर ट्रांसफार्मर की पावर चले गए तो ऑटोमेटिक वो DG सेट की तरफ आ जाता है, ठीक है। लिखिए, प्लेसमेंट ऑफ DG सेट, सॉरी ATS, स्टेप नंबर 18, राइट। प्लेसमेंट ऑफ automatic transfer switch, placement of automatic transfer switch, placement of automatic transfer switch, ATS। दो AC यूज कर रहे हैं, काय को यूज कर रहे हैं ऐसा? हम्म, टाइमर लगा दीजिए, टाइमर लगा दीजिए उसमें। टाइमर सेट कर दिए तो 12 घंटे का चलता, दूसरा फिर स्टार्ट हो जाता 12 घंटे का, ठीक।
क्या लिखे? कुछ नहीं। तो वैसे लिखे ना, मतलब कुछ कैसा नहीं लिखे, लिखे सिस्टम टैब, सिस्टम टैब, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, लोड फैमिली, सिस्टम टैब, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, लोड फैमिली, यूएस मेट्रिक इलेक्ट्रिकल, यूएस मेट्रिक इलेक्ट्रिकल, एमईपी, एमईपी, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर, डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक पावर, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, select automatic transfer switch, select automatic transfer switch, open, open, then place it. अच्छा ऐसा लिखे, open PP, PP, select 200 to 400 amps, PP, select 200 to 400 amps, edit type, edit type, duplicate, duplicate indirectly, edit type, switch voltage 415 volt, switch voltage 415 volt, okay, then place it, okay, then place it. Full stop. In the next line, select ATS from drawing, select ATS from drawing, option bar, distribution system, option bar, distribution system, option bar, distribution system, 415 by 240 volt, distribution system, 415 by 240 volt, PP, panel name, PP, panel name, ATS at the rate of, ATS at the rate of 400 amps at the rate of 415 volt, ATS at the rate of 400 amps at the rate of 415 volt. क्यों 400 amps लिए? आपका MDB कितने करंट के लिए है? 400 amps. तो सेम रेटिंग का क्या रहता है आपका? ATS रहता है, ठीक है? 400 amp, 415 volt. Then tag it, then tag it. ठीक है? ना अब इन सब के बीच में कनेक्शन करना है. कनेक्शन के लिए एक फिक्स रूल है जो फॉलो करना है अपन को. रूल ये है, अपने पास 4 इक्विपमेंट्स हो गए यहाँ पे. क्या क्या है? ट्रांसफॉर्मर, देन इधर अपने को डीजी है, डीजल जनरेटर. इंटरमीडिएट में क्या है अपने को? एटीएस. तब फाइनली किससे कनेक्ट करना है अपन को? एमडीबी ऑफ द बिल्डिंग. फर्स्ट करना है अपने को एमडीबी टू एटीएस. अब आप केबल को इधर से लेके जाइए, उधर से लेके आइए, करंट तो कैसा भी ट्रांसफर है, बट यहाँ पे कनेक्शन का थोड़ा सा रूल है. ओके, रिविट में तो फर्स्ट एमडीबी टू एटीएस, देन एटीएस टू transformer second, and then last third as a what? DG set to ATS. तो इसमें क्या रहता है? एक नॉर्मल NONC रहता है स्विच आपको, ठीक है? तो जैसे इसकी पावर आ रही तो इसकी तरफ ये स्विच ऑन रहता, जैसे पावर गई इसकी स्विच ओपन हो जाती है और इधर आ जाता है वो. ठीक है, ड्रॉ कीजिए. ड्रॉ कर लीजिए.
सर नेविस वर्क कब शुरू होने वाला है सर? इंशाल्लाह मंडे से आपका नाविस वर्क रहता है। ओके सर। क्लास नो चांसेस। ठीक है, ये हो गया ना। चलिए बताइए कैसे कनेक्शन करेंगे, जस्ट लाइक ए पैनल टू पैनल कनेक्शन। तो पहले किसे कनेक्ट करना है, एमडीबी टू एटीएस। तो सेलेक्ट द एमडीबी, देन पावर किधर कनेक्ट करना है अपन को, एटीएस। कहीं दिख रहा है एटीएस, यस एटीएस। एटीएस को किधर कनेक्ट करना है अपन को, ट्रांसफार्मर पावर। तो 2 वाट एज ए ट्रांसफार्मर 500 केवी। देन फाइनली डीजी सेट को किधर कनेक्ट करना है अपन को, एटीएस। तो पावर एटीएस, दैट्स ऑल। नहीं वो चैम्फर वायरिंग, यस करेक्ट, चैम्फर वायरिंग करना है। तो इज इट फाइन? तो दिस वाज द टोटल अबाउट द व्हाट, इलेक्ट्रिकल। अब इसमें आता है फायर अलार्म पब्लिक एड्रेसेबल सिस्टम। हेडिंग दीजिए, फायर अलार्म पब्लिक एड्रेसेबल सिस्टम। फायर अलार्म पब्लिक एड्रेसेबल सिस्टम। फायर अलार्म पब्लिक एड्रेस बोलते हैं ना, तो एड्रेसेबल, पब्लिक एड्रेसेबल सिस्टम। ठीक। तो note down this question, this total without any question. एक बच्चे थे मतलब थोड़ा सा साइज ज्यादा में लिखते थे, उनके ठीक होता है। आप लोग इलेक्ट्रिकल कितने हैं? देखिए
इसके लिए वेलकम टू ताइवा फॉर इलेक्ट्रिकल। पीछे बैठे हो तो पकड़िए, पूछिए cos phi क्या है, क्या है, ट्रांसफॉर्मर ये सब पढ़ना है क्लास 10 में पढ़ना। ट्रांसफर की कैपेसिटी जो है वो किलोवाट्स वैल्यू पावर फैक्टर कॉस्ट से डिवाइड कर दिए तो आपको एक्चुअल कैपेसिटी। ये मैं बताया कैसा कर सकते, कैसे भी आपको एल्टीट्यूड करके दें और थोड़ा डिटेल में चाहिए उनको प्रॉफिट लाइए ऊपर साइड में ले जाइए और पूरी बताइए। आपको अगर एक्चुअली का समझ नहीं है तो आप लोग प्रॉफिट लाइए। राइट ऑन नोट, इसके बाद लिखे नोट इन वन लूप maximum 156 number of input devices can be added. In one loop maximum 156, sorry, not 156, 127 number of, sorry, in one loop maximum 127 number of input devices can be added. One 27 number of input devices can be added. Full stop. Second point. In one loop maximum 56 number of, in one loop 56 number of output devices can be added. In one loop maximum 56 number of output devices can be added. So what is the meaning of MCP? मैनुअल कॉल पॉइंट। एमसीपी का मतलब क्या होता है? मैनुअल कॉल पॉइंट। कभी देखे मिले? इनसे कभी मिले? बिल्कुल, इसी को क्या बोलते हैं? मैनुअल कॉल पॉइंट। ठीक है, तो जब कभी कहीं पे आग दिख रहा और अलार्म नहीं बज रही, ग्लास ब्रेक कीजिए, बटन को पुश कीजिए, इट इज व्हाट एज ए इनपुट डिवाइस। ये इनपुट सिग्नल दे रहे हैं अपन इसको, है ना, इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट वी हैविंग व्हाट? स्मोक डिटेक्टर। इस तरह के डिटेक्टर देखे होंगे। ओके, स्मोक डिटेक्टर ऐसा ही कुछ रहता है अपने को, क्या? हीट डिटेक्टर। हीट डिटेक्टर, okay, so it will detect what as a heat, and that is smoke detector will detect what as a smoke percent, okay, and manual call point to give what as a input. So all these three are what as a input devices. इनपुट सिग्नल दे रहा है, किसको दे रहा है? एफएससीपी पैनल, फायर अलार्म कंट्रोल पैनल को सिग्नल दे रहा है। वहां से फायर अलार्म कंट्रोल पैनल क्या करता है? आउटपुट सिग्नल देता है, किसे? हुटर, स्पीकर्स को। ओके, इस टाइप के हुटर्स रहते हैं ना, फायर अलार्म स्पीकर्स। कभी कभी हुटर भी रहता है इस तरह, इसमें फ्लैश लाइट भी रहते लगे हुए। तो ये आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। इनपुट डिवाइस ये तीनों है, और ये क्या है आपका? आउटपुट डिवाइसेस। तो इन सब के बीच में क्या करना है? लूप क्रिएट करनी है। तो इसके लिए आपको डिटेल्स दिया हुआ। इन द स्प्रिंकलर बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग में स्प्रिंकलर यूज कर रहे हैं तो स्प्रिंकलर बिल्डिंग में आपको कितना लेना है डिस्टेंस बिटवीन द एमसीपी टू एमसीपी? 45 मीटर। नॉन स्प्रिंकलर बिल्डिंग 30 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड द फर्स्ट डिटेक्टर, कितना डिस्टेंस लेना है अपने को? 0.5। डिस्टेंस बिटवीन द स्मोक डिटेक्टर कितना लेना है? 10 meter, and one smoke detector will cover how much of area? 100 meter square. Similarly, one heat detector will cover how much? 50 meter square. Center to center distance of heat detector HD is what? 7.1. Sounded minimum height is how much? 1.5. इसको पूरा कीजिए, and maximum is 2.7 meter, and maximum and max 2.7 meter, and max 2.7 meter.
full stop. What is the cable size? It is determined as a cable recommended size 1.5 1.5. So it means if you take one loop, next point में क्या लिखे थे? In one loop maximum how much? 127. मतलब एक अगर केबल लेकर आए, जैसे एक सर्किट लेके आते हैं, एक केबल लेकर आए फायर अलार्म कंट्रोल पैनल से, उस एक केबल में कितने नंबर ऑफ इनपुट डिवाइसेस ऐड कर सकते हैं? तो 127, और वही लूप आपको फिर वापस जाता वहां पे। ठीक है, तो एक ये पावर सप्लाई हो गई और रिटर्न सिग्नल आ गया उसका, सेम केबल। ओके, वैसा ही आउटपुट डिवाइस में क्या है आपका, एक अगर लूप लेकर गए तो उसमें कितने ऐड कर सकते हैं अपन? 56 नंबर ऑफ आउटपुट डिवाइसेस वी कैन ऐड। तो जब फर्स्ट टाइम जब रिविट ओपन करे, मतलब आप जब प्रोजेक्ट करें इलेक्ट्रिकल पे, तो आपको उस टाइम में ये सारे फैमिलीज लोडेड नहीं रहते हैं, तो आपको लोड कराना ये फैमिली, नोट कीजिए। बीच में वॉल आ गया तो वो तो पहले ही खत्म हो जाता, रूम ही नहीं रहता फिर। अभी रूम है ना, यहाँ पे वॉल आ गई, तो अपना रूम कितने कितने साइज कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से लेके वहां तक ही कैलकुलेट करेंगे ना, तो फिर ये रूम अलग हो जाएगा ना, तो एक रूम में एक आ जाएगा। तो वो रूम के साइज के बेस्ट पे, ऐसा नहीं पूरे बिल्डिंग के लिए बोल रहे हैं। तो वन स्मोक डिटेक्टर कवर 100 मीटर स्क्वायर, अगर आपकी रूम की एरिया 10 मीटर स्क्वायर ईच है तो कम से कम एक तो लगेगा है। बस। ओवर। लिखिए, इसके बाद लिखिए। अच्छा, ये एमपीएस मैनुअल पुल स्टेशन, ब्रैकेट में लिख लीजिए एमसीपी। इसके एमपीएस के ब्रैकेट में लिखिए एमसीपी मैनुअल कॉल पॉइंट। यूके में एमसीपी बोलते हैं, यूएस में एमपीएस बोलते हैं, पता नहीं इसको क्या लगता है। ठीक है, एमपीएस। इसके बाद लिखिए इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब लोड फैमिली, इंसर्ट टैब लोड फैमिली। ये देखिए, क्योंकि ये जो इक्विपमेंट्स है ये सारे डिफरेंट कैटेगरीज के, जो अपन लिस्ट लिखे ना, ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के। तो अगर डिफरेंट कैटेगरीज को एक साथ लोड करानी है तो यू कैन गो फॉर इंसर्ट टैब। ठीक है, इंसर्ट टैब लोड फैमिली, यूएस मेट्रिक, यूएस मेट्रिक इलेक्ट्रिकल, यूएस मेट्रिक इलेक्ट्रिकल एमईपी, यूएस मेट्रिक इलेक्ट्रिकल एमईपी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस, फायर अलार्म, फायर अलार्म। select select the above mentioned, select the above mentioned components with help of control key
with help of control key open, with help of control key open, फुल स्टॉप। तो बताइए क्या क्या लोड कराना है? फायर अलार्म, एफएसीपी, फायर अलार्म स्पीकर, सॉरी फायर अलार्म कंट्रोल पैनल। तो यहाँ देखिए फायर अलार्म कंट्रोल पैनल है। इसके बाद क्या चाहिए? स्मोक डिटेक्टर, स्मोक डिटेक्टर नेक्स्ट, हीट डिटेक्टर नेक्स्ट, मैनुअल पुल स्टेशन होगा यहाँ पे, देखिए कहीं पे होगा मैनुअल पुल स्टेशन नेक्स्ट, फायर अलार्म स्पीकर, द फायर अलार्म स्पीकर, आफ्टर दैट ओपन। नेक्स्ट पॉइंट राइट डाउन, प्लेसमेंट ऑफ SD, placement of SD. Under that, write down. View tab, FAPA. Sir, Yes. placement of Placement of smoke detector. Short form में SD लिख सकते हैं. Placement of SD. Meeting is going to be ended within 1 minute. Reconnect fast. तो लिखिए PB, FAPA, ceiling plan 0-GF. PB, व्यू टैब नहीं, व्यू टैब नहीं जाना है, मैं बोला कट कर दीजिए उसको, व्यू टैब, व्यू ये एक्चुअली व्यू दिखिए हमें इसलिए। पीबी, पीबी इलेक्ट्रिकल, सॉरी पीबी FAPA सीलिंग प्लान 0-GF, सीलिंग प्लान 0-GF। सिस्टम टैब, इलेक्ट्रिकल पैनल डिवाइस, सिस्टम टैब, so no, ओके क्या लिखे थे? सिस्टम टैब, इलेक्ट्रिकल पैनल डिवाइस, फायर अलार्म, डिवाइस फायर अलार्म, डिवाइस फायर अलार्म, PP, PP, select a smoke detector ionization type, select a smoke detector ionization type, select a smoke detector ionization type, modify type, place on face, modify type, place on face, then place it, place on face, then place it, place it। तो कैसा प्लेसमेंट करना है? तो एक वन स्मोक डिटेक्टर विल कवर हाउ मच ऑफ एरिया? 100 मीटर स्क्वायर। इसकी एरिया कैसा चेक करेंगे? ये पिन किया हुआ है, तो ये देख, एरिया इज 43 मीटर स्क्वायर, तो एक काफी है। तो फायर अलार्म, PP, स्मोक डिटेक्टर, प्लेस ऑन फेस, इसकी साइज भी सेम ही है। Do we have to place in electrical room? Yes.
जैसे केबल बर्न होता तो केबल बर्न होगा तो हीट नहीं आएगा, क्या आएगा, स्मोक आएगा, तो स्मोक डिटेक्टर चाहिए। कार पार्किंग में हीट डिटेक्टर, किचन में हीट डिटेक्टर, तो जहां पे जो डोमिनेट करेगा वहां पे उससे को लगाना है। बेडरूम में स्मोक डिटेक्टर, क्योंकि अगर कभी बेडरूम में आग लगी तो क्या जलेगा, कर्टेन जलेगा, फर्नीचर जलेगा, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, ज्यादा स्मोक, तो स्मोक विल डोमिनेट दे। इलेक्ट्रिकल पैनल रूम में दोनों प्लेस करना है, योर स्मोक डिटेक्टर एज वेल एज हीट डिटेक्टर। केबल अगर ओवरलोड की वजह से बर्न हुआ तो स्मोक डिटेक्टर रिक्वायर्ड, और अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो हीट डिटेक्टर, ठीक है। वॉशरूम में, वॉशरूम में बिल्कुल प्लेस करना है वहां पे भी स्मोक डिटेक्टर ओनली, ठीक है। तो अब इसकी एरिया चेक कीजिए कितना है, एक काफी है, ओके। तो सेम, गेट सिमिलर, प्लेस ऑन फेस, इन द सेंटर आई जस्ट प्लेस इट, इस एरिया में प्लेस करना होगा, यस, कॉरिडोर के अंदर। कितना एरिया है इसका, 227, तो 3 स्मोक डिटेक्टर, तो सेलेक्टेड, गेट सिमिलर, प्लेस ऑन फेस, तो कितने डिस्टेंस पे प्लेस करेंगे अपन, तो स्मोक टू स्मोक डिटेक्टर डिस्टेंस हाउ मच, 10 मीटर, वो आपको पता है कैसा इक्वल करना है, वो आप कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट राइट डाउन, प्लेसमेंट ऑफ हीट डिटेक्टर, HT, प्लेसमेंट ऑफ हीट डिटेक्टर, HD, लिखिए। सिस्टम टाइप, डिवाइस, फायर अलार्म, सिस्टम टाइप, डिवाइस, फायर अलार्म, PP सेलेक्ट, हीट डिटेक्टर फिक्स टेम्परेचर टाइप, PP select heat detector fixed temperature type, modify type, place on face, Sir, PP select heat temperature. PP select heat detector fixed temperature type, heat detector fixed temperature type, modify type, place on face, तो कहाँ प्लेस करना है, इलेक्ट्रिकल रूम में, ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट आ रहा हूँ, प्लेसमेंट ऑफ MCP, नेक्स्ट प्लेसमेंट ऑफ MCP, ठीक है। सिस्टम टैब, फायर अलार्म, सिस्टम टैब, फायर अलार्म, PP, select MPS, select MPS, elevation equal to 1000 to 1500 mm, sorry, 1000 to 1300 mm, elevation 1000 to 1300 mm, 1000 to 1300 mm, then place it। तो MPS कहाँ पे प्लेस करेंगे, या MCP, तो नियर द व्हाट, स्टेयर, तब जहाँ पे एग्जिट करते हैं वहां पे, और नियर द प्लांट रूम और इलेक्ट्रिकल रूम। प्लांट रूम में ऐसा क्यों, क्योंकि अगर प्लांट में आग लगी तो उसके नजदीक भी चाहिए मैनुअल कॉल पॉइंट, ठीक है, तो इस तरह। नेक्स्ट, अगर मैं इस सब के बीच में वायरिंग करनी है, सबको लूप दिखाना है, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक पैनल चाहिए, उस पैनल का नाम क्या है, FACP, राइट। प्लेसमेंट ऑफ फायर अलार्म कंट्रोल पैनल, प्लेसमेंट ऑफ फायर अलार्म कंट्रोल पैनल, प्लेसमेंट ऑफ फायर अलार्म कंट्रोल पैनल। मैकेनिकल पीपल, अगर आप मैकेनिकल बैकग्राउंड है, आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ मैकेनिकली क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल वही करेंगे, बट आपसे जरूर पूछेंगे आपको इलेक्ट्रिकल आता है या नहीं आता, उसके बेस्ट पे आपको फिल्टर कर लेंगे। अगर 20 स्टूडेंट है, पोजीशन 5 है, तो कैसा फिल्टर करेंगे, इलेक्ट्रिकल के बेस्ट पे फिल्टर कर लेंगे, ठीक है। तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, पढ़ के रहिए। प्लेसमेंट ऑफ FACP, लिखिए अंडर दैट, सिस्टम टाइप, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट,
सिस्टम टैब, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। लेकिन अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि इलेक्ट्रिकल वाले से पूछो कि एचवीएसी आता है या नहीं। ओके, मतलब जितने भी फीडबैक आई एचआर की भी चाहे आपको स्टूडेंट का, मैकेनिकल वाले से पूछे कि इलेक्ट्रिकल आता है या नहीं, बट इलेक्ट्रिकल से आज तक कभी नहीं पूछे कि मैकेनिकल आता है या नहीं। पता नहीं क्यों। चल, ठीक। सिस्टम टैब, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, पीपी। पीपी, select FACP, select FACP, then place it, then place it. Skip, ESC, skip, full stop. Next line. Select FACP from drawing. Select FACP from drawing. PP. Panel name GF-FACP. PP. Panel name GF-FACP. Then tag it. Then tag it. Full stop. Next point. Creating loop. Creating loop. LOOP, loop. Right. Take mouse near to any smoke detector. लिखिए, take mouse near to any smoke detector. Right click. Take mouse near to any smoke detector. Right click. Select all instants. Right click. Select all instants visible in view. Select all instants visible in view. इससे क्या होगा? जितने स्मोक डिटेक्टर है सब सेलेक्ट हो जाता है ना। ऑब्वियसली किसी भी प्रोजेक्ट में स्मोक डिटेक्टर ज्यादा रहता है ना, इसलिए उसे सेलेक्ट कर लीजिए। देन कंटिन्यूज राइट ऑन। With help of control key, select remaining input devices. With help of control key, select remaining input devices. With help of control key, select remaining input devices. So which are the input devices remaining? So ये heat detector, then MCP. ठीक है। Right on. Modify tab, create system panel. लिखिए continue. Modify tab, create system panel, fire alarm. Modify tab, create system panel, fire alarm. ठीक है, fire alarm. In a panel list, select FACP. In the panel list, select FACP. Select chamfered wire. Select chamfered wire. Select chamfered wire. Full stop. ये देखिए, इसे क्या बोलते हैं? chamfered wiring. ठीक। Next point right now. Placement of fire alarm speaker. Placement of fire alarm speaker. Placement of fire alarm speaker. Right on. System tab. Fire alarm. PP. System tab. Fire alarm. इधर रहता फायर अलार्म, इलेक्ट्रिकल पैनल, डिवाइस, फायर अलार्म। ठीक है। PP select fire alarm speaker. PP select fire alarm speaker. Modify tab, place on face.
modify tab, place on face. Then place it. Then place it. तो स्पीकर टू स्पीकर कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है? 16 फीट, ठीक है ना? आप 16 फीट डिस्टेंस पे प्लेस कर दीजिए. तो डू वी रिक्वायर टू मेक अ प्लेसमेंट इनसाइड द रूम? नो. तो इफ रूम इज साउंड प्रूफ और बुलेट प्रूफ, तब अपन को क्या करना है? लगाना है. जैसे मूवी थिएटर्स, बाहर के साउंड अंदर नहीं आते. तो अगर बाहर आग लगी है, फायर अलार्म अगर बज रहा है, तो अंदर आवाज नहीं आती. तो उसके लिए क्या चाहिए? इनसाइड, इवन मूवी थिएटर के अंदर क्या चाहिए अपने को? फायर अलार्म स्पीकर चाहिए और फ्लैश लाइट. ठीक है. तो दिस वे. अब इसकी लूप क्रिएट करनी है, तो कैसा करेंगे बताइए? कैसा क्रिएट करेंगे? सेम, जस्ट टेक माउस हियर. क्योंकि ये आउटपुट डिवाइस है तो अलग 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 लूप आएगा. तो राइट क्लिक, सेलेक्ट ऑल इंस्टेंट विजिबल इन द व्यू. फायर अलार्म किस में ऐड करना है? फायर अलार्म कंट्रोल पैनल, चैम्फर्ड वायर, फुल स्टॉप. इजी है. बस आपको पोजीशन क्या है, कितने हैं, ये सब आपको डिजाइन में मिल जाता है. ठीक है ना? ना, जस्ट फॉर टुडे लास्ट राइट डाउन सब हेडिंग कंड्यूट. कंड्यूट, CONDUIT, कंड्यूट. नेक्स्ट टॉपिक हो गया वो कंड्यूट. CONDUIT, कंड्यूट. राइट डाउन. व्हाट इज अ कंड्यूट? पाइप. वो स्लैब के अंदर जो पाइप रहता है ना, देखते हो तो कंक्रीट से पहले पाइप डालते हैं केबल के लिए, उसी को कंड्यूट बोलते हैं. ठीक है, लिखिए. इट इज अ इनक्लोज्ड पैसेज. इट इज ए it is an it is an enclosed passage. ENCLOST. It is an enclosed passage used to pass sorry, it is an enclosed passage through which cables are passed. Cables are passed. Full stop. Next point. Through one conduit maximum through one conduit maximum through one conduit maximum 2 circuits can be passed. Through one conduit maximum 2 circuits can be passed. Full stop. Next point. The conduit size for lighting circuit is 20 mm. Conduit size for lighting circuit is 20 mm. Next. Conduit size for power circuit is 25 mm. Conduit size for power circuit is 25 mm. Next. If through one conduit one lighting and one power circuit through one conduit, one lighting and one power circuits are passed, then conduit size will be 25 mm. Then conduit size will be. तो मुझे इस एल्बो को क्या करेंगे? डिलीट कर देंगे. मैं इसे क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे. इलेक्ट्रिकल में कंड्यूट ड्रॉ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे पहला क्वेश्चन करेंगे कंड्यूट ड्रॉ करके दिखाओ. ठीक है ना? अब इसे इस पे एक्सटेंड कर लेंगे. तो ऑन दिस सरफेस एक्सटेंड इट. तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक टी की जगह पे क्या आ गया? जंक्शन बॉक्स. ठीक है, आप इसे फाइन कर लीजिए. कंड्यूट लुक हियर इन द 2D. हियर आल्सो फाइन. ये कंड्यूट आ गया. ये कंड्यूट है कहाँ पे? अंडर द स्लैब. लुक इन द 3D व्यू. अपन इस तरह ये ड्रॉ करें. फ्रॉम द पैनल, राइजर अप,
अंडर द स्लैब और इस कंटिन्यू कर रहा है। तो ये पाइप कहाँ पे अपने को अंडर द स्लैब है। इसकी एक ऑफसेट चेक कीजिए कितना दे रहा है, 3861 समथिंग। एग्जैक्टली मैं वैल्यू देख सकता है कि इसको 3870 करेक्ट है ना। एग्जैक्ट एक वैल्यू रहता है अपने को कंपेयर ना। अब यहाँ से मुझे कंटिन्यू करना है, ड्रॉ करना है, और मुझे इस स्विच बोर्ड के पास लेकर आने का है। यस, आपको वहां से कंडक्ट स्लैब आ रही, कहाँ पे आता है वो देखिए, वहां पे स्विच बोर्ड है। स्विच बोर्ड के पास क्या होता है, वो वहां पे नीचे ड्रॉप होगा। ठीक है, फिर स्विच बोर्ड से क्या होता है, ये अपने को ये लाइट फैंस वगैरह सबके पास आता है। तो वैसा ही मुझे यहाँ पे कंड्यूटिंग करने का है। तो अगर मैं कंड्यूट यहाँ तक लेकर आऊँ अंडर द स्लैब और मुझे यहाँ पे नीचे ड्रॉप करना है, तो क्या करेंगे आप, प्राइजर डाउन कर देंगे, सिंपल ऑफसेट चेंज करेंगे। कैसा, ये देखिए, फ्रॉम हियर सेलेक्टेड, राइट क्लिक, ड्रॉ कंड्यूट। ये ड्रॉ कंड्यूट कर रहे हैं। सपोज की जगह रास्ते में कोई इक्विपमेंट्स आ गई तो क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरी गुड। क्यों, क्योंकि ये तो कंड्यूट ऑलरेडी अंडर स्लैब है। ठीक है ना। तो अपन यहाँ से स्टार्ट करें स्ट्रेट, फ्रॉम हियर टिल सेम लेवल पे अपन यहाँ से जंक्शन बॉक्स यूज होगा और यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो क्या करेंगे, सेलेक्टेड, क्रिएट सिमिलर, फ्रॉम हियर। इधर स्विच बॉक्स के पास मुझे क्या करना है, नीचे ड्रॉप करना है। तो कैसा राइजर डाउन करेंगे, तो 3870 पे मुझे जाना है, कितने पे स्विच कितने पे प्लेस कर रहे थे अपन, 1200 mm पे। तो 1200 mm, देन डबल क्लिक ऑन व्हाट, अप्लाई। बट यहाँ पे फिर भी क्या होता है, अपने को ये आ जाती है, एल्बो आ जाता है, ये देखिए। तो जैसे वहां से जब नीचे आएगा स्लैब के अंदर से, तो एल्बो नहीं आएगा, क्या आएगा वहां पे, अगेन जंक्शन बॉक्स। तो मुझे यहाँ पे इसकी जगह पे क्या चाहिए, जंक्शन बॉक्स चाहिए। तो क्या करेंगे, इसे डिलीट कर देंगे, सिंपल। ओके, देन इसको एक्सटेंड करेंगे। तो अगर मैं एक्सटेंड करा यहाँ से डायरेक्टली, सपोज 2000, देन इस सरफेस पे, नहीं ट्रिम नहीं, एक्सटेंड ऑन दिस सरफेस, आई वांट टू एक्सटेंड दिस कंड्यूट। परफेक्ट। तो कंड्यूट यहाँ से नीचे की तरफ ड्रॉप हो गई, एक्सटेंशन ने। फिर यहाँ से कंड्यूट लेकर आएंगे और वो कहाँ पे जाएंगे, जहां जहां पे लाइट है, फैंस है, वहां पे वो ड्रॉप होंगे। फिर कैसे बताइए, मुझे नीचे 1200 पे स्टार्ट करना है और ऊपर अंडर स्लैब आना है। कैसा बताइए, सेलेक्टेड किट सिमिलर, स्टार्ट कहाँ से करना है अपन को, 1200 mm, दैट्स इट। तो यहाँ पे हिट करा मैं 1200 पे, ऊपर कहाँ पे आना है अपने को, सेम। आप यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो वैल्यू भी आ जाता है 3870। आफ्टर दैट अप्लाई, अप्लाई, तो राइजर क्रिएट हो गया। सेम ऑफसेट पे मुझे यहाँ से क्या करना है, कंडी ड्रॉ करना है। तो स्ट्रेट ड्रॉ कर लिया अपन, अंडर द स्लैब लो, बट शायद यहाँ पे एल्बो आ गया होगा। फिर क्या करेंगे, सेम, सेलेक्टेड, डिलीट दैट, एक्सटेंड कर लेंगे लेंथ। अरे, तो एंगल में चलेंगे ना, राइट क्लिक, ड्रॉ कंड्यूट। तो while you're drawing the conduit, make sure that, can you see that dotted line, एंड पे देखिए डॉटेड लाइन दिख रहा है आपको एक, नहीं दिख रहा, अब देखिए। तो ये डॉटेड लाइन है, इसका मतलब ये लाइन स्ट्रेट है। अगर डॉटेड लाइन है, इसका मतलब लाइन स्ट्रेट नहीं है। तो ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। सरफेस पे इसे क्या करना है, ड्रैग कर मतलब एक्सटेंड करना है। तो ऑन दिस सरफेस एक्सटेंड इट अगेन। अब जो एक्सटेंडेड वाली है उसको डिलीट कर देंगे। परफेक्ट है ना। अब इस कंड्यूट को क्या करना है, मुझे यहाँ से हर पॉइंट के पास ले जाकर ड्रॉप करना है। कैसा करते हैं, सेम हियर, सेलेक्ट, राइट क्लिक, ड्रॉ कंड्यूट। यहाँ तक आ रहे हैं अपन स्ट्रेट, सेम ऑफसेट से अपन इधर ड्रॉ करेंगे। ओके, फर्स्ट लेट मी ड्रॉ दिस। अब मुझे इधर भी ड्रॉ करने का कंड्यूट, बट यहाँ पे पॉइंट नहीं है। तो यहाँ देखिए प्लस सिंबल दिख रहा है आपको, जस्ट हिट करेंगे प्लस सिंबल आ जाते हैं। अगेन सेलेक्टेड, राइट क्लिक, ड्रॉ का। ये बार बार ऐसा ये क्यों आ रहा, क्योंकि ये स्क्रीन में जूम किया हुआ है। राइट क्लिक ना, ड्रॉ कंड्यूट, दैट्स इट। एज सिमिलरली मुझे यहाँ पे भी ड्रॉ करना है। तो सेलेक्ट, क्रिएट सिमिलर। ये जो कंड्यूट्स है ये सारे कहाँ पे अपने को, अंडर द स्लैब है। सेलेक्टेड, हिट है, अगेन सेलेक्ट, राइट क्लिक, ड्रॉ कंड्यूट।
तो ये जो अभी कंड्यूट जो अपन ट्री बना है ये कहाँ पे अंडर द स्लैब है, इज इट करेक्ट? ये जो कंड्यूट है ये कहाँ पे अपने को अंडर द स्लैब। अब नीचे यहाँ पर नीचे ड्रॉप करना है, कैसा ड्रॉप करते हैं? तो सेलेक्ट द कंड्यूट, गेट सिमिलर, इसी लेवल पे मुझे नीचे आना है। लाइट कितने पे है? 10 फीट, क्योंकि फॉल सीलिंग कितना 10 फीट पे, तो अपन 10 फीट में, 10 फीट का वैल्यू कितना होता है? 3048। डबल क्लिक ऑन अप्लाई। एक्सटेंशन नहीं चाहिए, डिलीट कर दीजिए। चेक कीजिए 3D व्यू में जी। हाँ तो डबल क्लिक करेंगे तभी तो नीचे जाएंगे ना वो। राइजर ड्रॉ करें, राइजर डाउन कर रहे हैं अपन, इसलिए। ठीक। तो बट ये पाइप देखिए, ये कंड्यूट ये लाइट्स के बाहर आ गया क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा ले लिया आपको रेफरेंस। ये कितना चाहिए मुझे? 3048 पे, मतलब लेवल से कितने हाइट पे चाहिए मुझे? 3048 पे। तो वो किया है अपन। एज सिमिलरली मुझे हर पॉइंट पे जाके ड्रॉप करने का है। कैसा ड्रॉप करेंगे? सेम, आई विल जस्ट डिलीट दिस, अगेन सिलेक्ट है। फिर से देखिए आप गौर से, इस लेवल पर अपन स्टार्ट करें। कितने लेवल पे? ये 387 अंडर स्लैब है। तो मुझे यहां से, अच्छा ये जो हाइट है 3870 कहाँ से मेजर हो रहा है ये? फ्रॉम द लेवल। किस लेवल पे? तो ग्राउंड फ्लोर लेवल से। कितने हाइट पे? वो 3870। बट मुझे इसी लेवल से 3870 पे नहीं चाहिए, किससे पे चाहिए? 3048 पे चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यू क्या चेंज करेंगे? 3048। डबल क्लिक ऑन व्हाट? अप्लाई। तो क्या होगा? नीचे आ जाएगा वो, सिंपल पॉजिटिव। तो ये आगे नीचे। एज सिमिलरली सेलेक्ट है, गेट सिमिलर, अगेन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, नीचे जाना है मुझे कितने पे? 3048 पे। डबल क्लिक ऑन अप्लाई, अगेन सिमिलरली है। अच्छा ये एक्सटेंशन है, मुझे इसको डिलीट कर दूंगा। सेलेक्ट इट, गेट सिमिलर, फ्रॉम हियर आई वांट टू ड्रॉप डाउन, कितना? 3048। डबल क्लिक ऑन अप्लाई, डिलीट कर दे। गेट सिमिलर, फ्रॉम हियर ड्रॉप डाउन 3048, डबल क्लिक ऑन अप्लाई। Create similar, from here 3048, double click on apply. Look here in 3D, सारे पाइप जो देखिए आउट ऑफ रेंज है। अगर मैं सबको सिलेक्ट करूं तो आएगा वैल्यू, आ जाएगा। ये सब कितने पे चाहिए मुझे? टॉप ऑफसेट, ऑफसेट, बॉटम ऑफसेट दिस मच, तो कितना? 3048। अरे इतना आराम से बजा रहे को भाई। जी, फैमिली बना। हाँ, तो वो ट्रंकिंग इसमें नहीं दिया हुआ ऑप्शन है। ट्रंकिंग इसमें नहीं दिया हुआ आपको। आपको जब वो एमईपी फैब्रिकेशन बताएंगे ना सर, उस टाइम में वो ट्रंकिंग बताते हैं आपको हमेशा। हाँ, क्या क्या? नहीं समझा मैं। अगर लिंक फाइल की, खुद की फाइल को अगर हाइड करना है तो डिविट लिंक में जाएंगे। करंट फाइल की ऑब्जेक्ट को अगर हाइड करना है तो, हाँ अगर इवन लिंक फाइल से कॉपी भी कर लिए तो करंट फाइल बन जाता है वो। तो अगर करंट फाइल को कुछ भी करना चाह रहे हैं तो आपको वीजी बाहर में ही रहना पड़ता है। रिविट की जो लिंक फाइल है जिसे आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसको कंट्रोल करना है तो रिविट लिंक में आना है। ठीक है। अच्छा रिकॉर्डिंग एंड कर लीजिए ना उसका। क्या बज रहा है वो? अलार्म है? इस टाइम में कौन अलार्म बजता है भाई? ओके यहाँ देखिए, इज इट फाइन दिस वे?
अच्छा ये भी है लास्ट वाला, कितना 3048। नहीं कंड्यूटी चाहता क्योंकि फ्लेक्सिबल ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। नहीं तो ओके, आपको ये ड्रॉ करके दिखाना रहता है इस तरह। अगर दिखाना चाह रहे हैं तो अपने को फ्लेक्सिबल पाइप है तो फ्लेक्सिबल पाइप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज, तो ये करने आना चाहिए कैसे भी, कंडक्ट ड्रॉ करना। नेक्स्ट इसके बाद आफ्टर दिस, सपोज कीजिए मुझे इसके पैरेलल में और भी कंडक्ट ड्रॉ करना है, इसके पैरेलल में मुझे और भी कंडक्ट ड्रॉ करना है। फॉर दैट राइट ऑन नेक्स्ट स्टेप, पैरेलल कंडक्टिंग, पैरेलल कंडक्टिंग, पैरेलल कंडक्टिंग, another right on system tab, electrical panel, system tab, electrical panel, parallel conduit, system tab, electrical panel, parallel conduit। क्या लिखे, सिस्टम टैब, इलेक्ट्रिकल पैनल, पैरेलल कंड्यूट, मॉडिफाई टैब, मॉडिफाई टैब, जी ठीक। अच्छा ठीक, मॉडिफाई टैब, हॉरिजॉन्टल नंबर एग्जांपल 5, मॉडिफाई टैब, हॉरिजॉन्टल नंबर एग्जांपल 5, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट एग्जांपल 150, horizontal offset example 150, horizontal number 5, horizontal offset 150, horizontal offset 150। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन ड्रॉ हुई हुई ना कंड्यूट, इसके पैरेलल मुझे 5 कंड्यूट चाहिए और कंड्यूट टू कंड्यूट के बीच में गैप कितना होना, 150 mm, ठीक है। नाउ टेक अ माउस नियर टू द कंड्यूट, टेक माउस लिखिए, टेक अ माउस, टेक अ माउस नियर टू द कंड्यूट, प्रेस टैब की, take mouse near to the, take mouse near to the conduit, press tab key, left click, press tab key, left click, full stop। यस अब यहाँ पे देखिए, मैं इस कंड्यूट के नजदीक जो ऑलरेडी ड्रॉन है इसके नजदीक में माउस लेके गया तो ये डॉटेड लाइन दिखा रहा है मुझे, मतलब इसके पैरेलल ये ड्रॉ होगा। नहीं मुझे सिर्फ ये पार्ट नहीं, ये जितना ड्रॉ करे मुझे सब चाहिए। तो टेक अ माउस हियर, प्रेस द व्हाट, टैब की, तो प्री सिलेक्शन बता रहा है वो टोटल, दिखा ना डॉटेड लाइन, लेफ्ट क्लिक, ये टोटल कंड्यूट ड्रॉ हो जाता है इसके पैरेलल। वन सेकेंड हियर से, पैरेलल कंड्यूट कितना नंबर, 5 नंबर, गैप एज 150, टेक अ माउस नियर टू द वर्ड कंड्यूट, तो ये डॉटेड लाइन दिखा रहा है बट मुझे ये पूरी लूप सिलेक्ट करनी है तो क्या करेंगे, प्रेस टैब के, सब हो जाता है वो, देन लेफ्ट क्लिक, किस तरह के। तो लाइक दिस वे वी कैन टेक टू द अनदर वेज आल्सो। हाँ तो अगर मान लीजिए, तो वो तो एक कॉन्सेप्ट था आपका इलेक्ट्रिकल डिजाइनिंग का। अब सपोज कीजिए इस रूम में मेरा एक ही सर्किट आ रहा, तो एक तो कंड्यूट कैसे भी लेके आना पड़ता मुझे, इसी कंड्यूट में अगर इस रूम का भी सर्किट है तो इसी कंड्यूट से अपन क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ लेकर जाएंगे, नहीं रहा तो नहीं लेकर जाएंगे। नहीं नहीं, सर्किट नहीं बना, सर्किट तो 3 तो एक ही था, स्विच अलग थे, सर्किट तो एक ही चाह रहा था, स्विच अलग थे, ठीक है। वैसा जब से इस रूम में अपने को 2 सर्किट्स थे तो एक कंड्यूट से मुझे 2 सर्किट जा रहा तो कोई बात नहीं। हाँ, अगर प्रॉब्लम कब होता, अगर मुझे एक रूम में 3 सर्किट्स आते तब मुझे एक कंड्यूट से 2 सर्किट आ रहा
और दूसरी भी जो कंड्यूट वही यहीं पे आके ड्रॉप करेंगे। हाँ, एक कंड्यूट में सिर्फ 2 ही सर्किट ले सकते हैं बस। उससे क्या होता है, एयर गैप रहता है अंदर में, तो केबल की कूलिंग थोड़ी हो पाती, नहीं तो क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, तो इज इट इजी? तो जहां पे भी कंड्यूट, मुझे सपोज कि इधर इसी कंड्यूट से इधर लेके आना है लूप, तो राइट क्लिक, ड्रॉ कंड्यूट, यहाँ पे ड्रॉप कर लें। इस कंड्यूट को मान लीजिए रास्ते से कहीं बाईपास करना है, तो अपने को इसको पीछे करना होगा, उसे आगे करना होगा, तो आप वो अरेंजमेंट कर ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइटम, केबल ट्रे। नेक्स्ट गिव द हेडिंग केबल ट्रे। केबल ट्रे, बस केबल ट्रे आखिरी है। ओके, देखिए केबल ट्रे लिखिए। केबल ट्रे ड्राइंग इज सिमिलर टू डक्ट ड्राइंग। केबल ट्रे ड्राइंग इज सिमिलर टू डक्ट ड्राइंग। Cable tray drawing is similar to duct drawing. फुल स्टॉप। मतलब क्या हुआ, जैसा अपन डक्ट ड्रॉ करें ना, सेम वे केबल ट्रे ड्रॉ करना है। उसकी भी एल्बोस, ब्रांचेस, फिटिंग्स, रेड्यूसर, राइजर अप, राइजर डाउन, ये सब सिमिलर है। लिखिए नेक्स्ट लाइन में, लिखिए इन द नेक्स्ट लाइन राइट डाउन सिस्टम टैब, इलेक्ट्रिकल पैनल, केबल ट्रे। सिस्टम टैब, इलेक्ट्रिकल पैनल, केबल ट्रे। सिस्टम टैब, इलेक्ट्रिकल पैनल, केबल ट्रे। ऑप्शन बार, select width and height. Option bar, select width and height. Select width and height, and also middle offset. And also middle offset. Then draw cable tray. Then draw cable tray. Full stop. ठीक, तो सपोज कीजिए मैं केबल ट्रे की साइज ले रहा हूं 600 बाई 100 mm। फॉल सीलिंग कितने हाइट पे, 3048 पे, उसके ऊपर है ना केबल ट्रे। तो मैं मान लीजिए कितना ले रहा हूं, 3200। करेक्ट है, तो मैं यहां से ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहा हूं। अच्छा, या मैंने तो केबल ट्रे के टाइप चेंज करा एज अ व्हाट, लैडर टाइप। मैं इसे ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहा हूँ, रास्ते में देखिए कंड्यूट आ रहा, तो क्या होगा, क्लैश नहीं होगा ना, क्योंकि वो तो अंदर स्लैब है। सिंपल, इसलिए घबराना नहीं यहाँ पे कि क्लैशेस हो रहे। कंड्यूट हमेशा क्या रहता है, अंडर द स्लैब। ओके, हमेशा नहीं, कभी कभी ऐसा रहता है ओपन वायरिंग भी रहती है अपने को कंड्यूटिंग, तो अपने को उसको फॉल सीलिंग के ऊपर रहेंगे। तो फ्रॉम हियर द केबल ट्रे वी एम ड्रॉइंग। सपोज कीजिए मुझे यहाँ पर रिड्यूसर चाहिए, मतलब केबल कम हो जा रही तो रिड्यूस करना है। डू हियर 450, ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या जाता, रिड्यूसर आएगा। सपोज फ्रॉम हियर आई वांट टू टेक अ एल्बो, मतलब यहाँ से बेंड करना चाह रहा हूँ, तो ओके, चेंज द डायरेक्शन अगेन फ्रॉम हियर, यस यू कैन। सपोज कि रास्ते में कोई इक्विपमेंट्स आ गए, तब क्या करेंगे, तो ऊपर राइजर अप कर लेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने जो स्लैब है वो 38 पे है, तो अपन 35 पे जा सकते हैं। यस, 3500। जस्ट मैं ऑफसेट चेंज कर रहा हूँ। ये पहले ये केबल ट्रे कितने पे है, 3200। अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ 3500, हिट करें अगेन, फिर इसके बाद मुझे क्या चाहिए, 3200। चेक कीजिए 3D में, इस तरह ये क्या हुआ, ये राइजर अप होके वापस फिर डाउन आएगा। ये जो फिटिंग से ये ऑटोमेटिक आ जाती है आपको। तो अपन यहाँ तक कितने पे थे, 3200। जैसे यहाँ से अपने ऑफसेट चेंज करके यहाँ तक ड्रॉ करा 3500, तो ऑटोमेटिक इसमें क्या जाती है, फिटिंग आ जाती है। ये तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक आप इसकी फिर से ऑफसेट चेंज नहीं करेंगे। अपन फिर यहाँ से क्या करें, ऑफसेट चेंज करें, ऐसा आ गया। अगर मुझे यहाँ से राइजर अप करना है तो कैसे, तो राइट क्लिक, ड्रॉ केबल से, तो राइजर अप क्या करेंगे, वैल्यू वॉट एवर, सपोज आई एम टेकिंग 10,000, अप्लाई, अप्लाई,
तो राइजर, सपोज कीजिए मुझे यहाँ से ब्रांच लेने का है, तो सेलेक्ट इट, टेक अ ब्रांच। अच्छा, ऑफसेट कुछ और आ रहा है, कितना ऑफसेट चाहिए? 3200। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या आते हैं, रिजल्ट। सपोज दैट मुझे 4 वे चाहिए, इधर भी चाहिए मुझे, यहाँ से इसे सेलेक्ट कीजिए, हीट ऑन द प्लस, अगेन राइट क्लिक, ड्रॉ केबल। इज इट नॉट सिमिलर टू द डक्ट? यस। तो राइजर देखिए यहाँ पे, ये राइजर आएगा। अब सपोज कीजिए एग्जांपल, ऑन द सेकेंड फ्लोर वी हैविंग हियर द पैनल चिल्लर, और इन लोग की जो केबल कनेक्शन किससे हो रही है अपने को? टू द एमडीबी, करेक्ट है। तो ये केबल वहां तक कैसा जाएगा? तो विथ हेल्प ऑफ केबल ट्रे। तो मुझे यहां से केबल ट्रे लेकर आना है ओटीएस में, राइजर अप करके दोनों को कनेक्ट करना है। कर सकते हैं? यस, बिल्कुल। स्टार्ट करते हैं अपन। तो कहां से जा रहे हैं अपन? सेकेंड फ्लोर पे आ रहे हैं, यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट। तो वी आर ऑन द फ्लोर प्लान, वी कैन गो फॉरवर्ड, सीलिंग प्लान लेवल, सेकेंड फ्लोर, सिस्टम टैब, इलेक्ट्रिकल पैनल, केबल ट्रे, डाटा टाइप। अपन ये साइड जो लेके जा रहे हैं उसको अपन 300 by 100 ले रहे हैं। फॉल सीलिंग कितने हाइट पे? 10 फीट, 3048। कैन आई टेक एज ए 32 सेम 00, 3200। यहाँ से केबल ट्रे लेकर आ रहा है, इधर से भी लेकर आ रहा है। इसे फाइन कीजिए, लैडर दिखेगा आपको। बट ये तो फॉल सीलिंग के ऊपर हो गया ना, ऊपर स्लैब से आ रहा है। तो केबल तो ट्रे तो नीचे आना चाहिए अपने को, तभी तो उसके ऊपर केबल ले जा सकते हैं अपन। तो यहाँ से क्या करेंगे अपन? राइजर डाउन करेंगे, राइट क्लिक, ड्रॉ केबल। कितने पे? तो पैनल बोर्ड की प्लेसमेंट अपन कितने करे थे? 1200 mm पे। तो बॉटम हो गया उसका। तो अब तो ज्यादा होगा ना। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ 1800 पे। अप्लाई, अप्लाई, चेक कीजिए 3D व्यू में कैसा है। वेर इज इट? देखिए, परफेक्ट है ये। तो केबल के थोड़ी सी अंदर जा रही, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। कितने पे? 1900। अब इस पैनल से क्या होगा, केबल इसके ऊपर जाएगा, इसे भी सेम करना है। ठीक, तो इधर मैं इसे कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ, नहीं तो राइजर क्रिएट कर लेंगे। सेलेक्ट, राइट क्लिक, ड्रॉ केबल। कितने पे रखेंगे? 1900। डबल क्लिक ऑन व्हाट? अप्लाई, दैट्स इट। तो ये तो थोड़ा, क्योंकि इसकी साइज छोटी है, तो इसे अपन कितने पे रख सकते हैं? 1700 पे। हाँ, अब इन दोनों को किसमें कनेक्ट करना है? एक मेन केबल ट्रे से। तो इन दोनों केबल ट्रे पे कितने केबल्स आते हैं? एक एक केबल आते हैं। बट मेन केबल पे कितने आ जाते हैं? केबल ट्रे पे 2 केबल। तो केबल ट्रे की साइज बढ़ जाएंगे। अब केबल ट्रे की साइजिंग कैसा करते हैं? दैट विल बी डन बाय द इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, नॉट बाय यू। ओके, नेक्स्ट हियर सी। तो केबल ट्रे ऑन द सेम ऑफसेट कितना? 3200, बट साइज अपन इंक्रीज कर ले रहे हैं, सपोज दैट एज ए 600 फ्रॉम। यस। अब इन दोनों को कनेक्ट करना है, तो कैसा करते हैं? एक्सटेंड कर लेंगे, सिंपल, मल्टीपल। ऑन दिस सरफेस आई वांट टू एक्सटेंड दिस बोथ। मसला हुआ, क्या मसला हुआ? फिटिंग का। फिटिंग के लिए जगह नहीं बच रही इसको। तो आपको क्या करना होता? केबल ट्रे और पैनल दोनों को मूव कराना है थोड़ी सी। लेट्स सी नाउ, एक्सटेंड इंडिविजुअली। अब इसे एक्सटेंड कर लेंगे सेम। एल्बो आ रहा, नहीं मुझे, आपको टी चाहिए, टी टाइप के, तो ठीक है, आप इसे और एक्सटेंड कर लीजिए। देन ऑन दिस सरफेस, ठीक है, इसकी जो एक्सटेंशन है अपन इसको डिलीट कर देंगे यहाँ पर। That's it. अब ये केबल ट्रे कहाँ जाएगा? ओटीएस में। तो फ्रॉम हियर
right click, draw cable, drop to the what here. अगर मेरे पास जगह है तो जगह बचा लेंगे, मूव या एरो से यूज कर लेंगे, जितना मिनिमम पॉसिबल हो सके। That's it. Now leave. From here, riser down. तो राइट क्लिक, ड्रॉ केबल, कितने पे ले जाएंगे बोलिए। अपन अब सेकेंड फ्लोर पे, सेकेंड फ्लोर से नीचे जाना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, माइनस वैल्यू आएगा, वेरी सिंपल। अपन अगर सेकेंड फ्लोर से ऊपर अगर वैल्यू जा रहा है, पॉजिटिव वैल्यू तो ऊपर आ रहा, चाहे केबल ट्रे से नीचे भी रहेगा तो लेवल के ऊपर ही रहेगा, बट मुझे अब लेवल से नीचे जाने का है, और रेफरेंस क्या अपना सेकेंड फ्लोर, तो निगेटिव वैल्यू आएगा, तो अपन कितना वैल्यू देंगे, -10,000 दे सकते हैं ना, ओके। तो देन अप्लाई, अप्लाई, तो राइजर डाउन हो जाता है। नेक्स्ट कमिंग टू द व्हाट, ग्राउंड फ्लोर। फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर यहां से केबल ट्रे लेके आना है, फिर इसके साथ कनेक्शन करने हैं, तो लेट अस ट्राई। तो क्या केबल ट्रे की साइज थे, सेम साइज, तो सिस्टम टाइप केबल ट्रे एज अ सेम वन, 3200 यहां से स्टार्ट कर रहा है। लाइक दिस वे। अब इन दोनों को कनेक्ट करना है, तो पहला काम क्या करना होगा, अलाइन along this point, I want to align this one, perfect। दोनों को 3D व्यू में जाके क्या करेंगे, या सेक्शन कट करके अपन ट्रिम कर लेंगे, ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर, दिस वन टू दिस वन। नेक्स्ट आफ्टर दैट, अब इसके वो नीचे भी क्या करना होगा अपने को, राइजर डाउन, isn't that? So select it, right click, draw cable tray, take it down to the how much, 1900, apply, apply, चेक कीजिए 3D व्यू में। From MDB through this cable tray, cable will be riser up and it will be dropped to the what, each and every chill panels। ये ड्रॉ करने आना चाहिए, ठीक है। नाउ one thing, the last one, okay। नेक्स्ट here से अपन 3D व्यू में केबल नहीं दिखा सकते रिविट में, जैसे अपन वायर ड्रॉ करें ना, वो वायर 3D व्यू में ड्रॉ नहीं कर सकते, देयर इज नो ऑप्शंस। अब रिविट ने ऐसा क्यों करा, सब कुछ दिया, ये क्यों नहीं दिया, तो एक इसके पीछे लॉजिकल थिंग्स है। जैसे अगर मैंने कंड्यूट ड्रॉ करा तो केबल कहाँ जाएगा, कंड्यूट के अंदर, तो बस हो गया खत्म। आपने कंड्यूट ड्रॉ कर दिया मतलब क्या है, केबल ड्रॉ कर दिया अंदर। तो वैसा ही अगर मैं यहाँ से ट्रांसफॉर्मर से केबल लाकर एटीएस को कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो आप आपको यहाँ पे कंड्यूट ड्रॉ करके दिखाना होगा और ये बोलना होगा ये क्या है, आपका केबल है। कैसा करेंगे, चलिए देखते हैं। ऑन द ग्राउंड फ्लोर मुझे ट्रांसफार्मर को जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो याद कीजिए यहाँ पे देखिए ये कंड्यूट कनेक्टर्स है। आपको याद होगा जब अपन एएचयू क्रिएट करे थे तो एएचयू के ऊपर एक कंड्यूट कनेक्टर ऐड करे थे, तो वो कंड्यूट कंड्यूट ड्रॉ करने के लिए नहीं, एक्चुअली किस लिए, वो केबल शो करने के लिए। आया समझ में ना। तो फ्रॉम दिस कॉर्नर आई वांट टू ड्रॉ इट, राइट क्लिक, ड्रॉ कंड्यूट फ्रॉम फेस, सेम वे यहाँ पे दिखा था इस फेस से ड्रॉ होने का, ओके। फिनिश कनेक्शंस, कितने साइज का चाहिए, तो मैं साइज इंक्रीज कर रहा हूँ, सपोज एज ए 53 mm। तो केबल जो है अपने को प्लिंथ के ऊपर में है, तो केबल मेरा क्या होगा, नीचे आएगा, तो फ्रॉम हेयर इट विल बी गो टू द डाउन। कितना डाउन, 0 पे लेकर आए तो जमीन के अंदर, तो अपन क्या करेंगे 200 mm ऊपर रखेंगे, तो कितना हो जाता, 200 mm। डबल क्लिक ऑन व्हाट, अप्लाई, दैट्स इट। नाउ ड्रॉ द सेक्शन फ्रॉम दिस साइड। क्या रात को सोए नहीं सही से, okay। Now here see the fine, from here right click, draw conduit, draw it here,
सीन 3D में ट्रांसफार्मर से केबल नीचे आ रही, किसे कनेक्ट होगा वो? एटीएस का। चलिए सेम वे जस्ट एटीएस को सेलेक्ट कीजिए। ओके, अगर इसके लाइन में नहीं आएगा तो इसको खिसका लेंगे इधर। ठीक है, तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं, राइट क्लिक, ड्रॉ कंड्यूट फ्रॉम फेस, फिनिश कनेक्शन। कितने साइज का चाहिए? सेम 53 mm। मुझे यहाँ से क्या करना है? डाउन जाना है, एटीएस भी हाइट पे है ना, तो नीचे आना है मुझे। कितने पे? 200 mm। डन। अगेन create the section from this side, right click, go to view, keep as a fine, right click, draw conduit। शायद यहाँ पे ये ड्रॉ नहीं होगा क्योंकि फिटिंग आ रही वहां पे। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, यहाँ देखिए, एटीएस की थोड़ी सी हाइट चेंज करेंगे। ये ऑफसेट कितना है इसका? 0 दे रहा है, बट ये वॉल पे माउंट होता है। कितने पे? 1000 mm। अब ये ड्रॉ हो जाता है, राइट क्लिक, ड्रॉ कंट। अच्छा, ये अपोजिट होंगे। ड्रॉ कंड्यूट है इसमें। अब ये दोनों अलाइन नहीं है तो क्या करेंगे? ये दोनों अलाइन नहीं है, मैं चाह रहा हूँ स्ट्रेट रखो, तो क्या करेंगे अपन? इसे थोड़ा सा मूव करा लेंगे अपन, मूव। देन यू कैन अलाइन इट along this line, along this। अभी सेम लेवल पे है तो इजीली क्या होगा, ये ट्रिम हो जाएगा फ्रॉम दिस वन टू दिस। इट्स ओके। अब एटीएस से केवल किसको कनेक्ट हो रहा? एमडीबी का। सेम एमडीबी से लेकर आइए, कनेक्ट कीजिए इसको। जनरेटर किससे कनेक्ट हो रहा? टू द एटीएस। यहाँ से कंड्यूट ड्रॉ करके लाइए, यहाँ पे प्लेस कीजिए। अब कंड्यूट तो यहाँ, ये मान लीजिए केबल है, तो केबल तो ऐसी हवा में तो नहीं आएगा, तो फिर किस पे? केबल ट्रे पे। ये किस बाहर से किस पे आएगा वो? केबल ट्रे पे। अब इसके नीचे मुझे केबल ट्रे ड्रॉ करना है। कैसा ड्रॉ करते हैं केबल ट्रे? तो सिस्टम टैब, केबल ट्रे, साइज आई एम टेकिंग एज अ व्हाट, सम लिटिल बिट 150 by 100। ऑफसेट कितना? नो 200 नहीं, 100 लेते हैं अपन। बस 100, 100 पे यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। साइज कम हो जा रही, तो हम बोल रहे हैं कि डरा रहे हैं उन्हें। ऐसा ड्रॉ कर लेंगे अपन स्ट्रेट। now move it manually, yes, check the section, that will be better। तो कंड्यूट यहाँ पे, केबल ट्रे यहाँ पे, तो अपन इसकी भी ऑफसेट कितना देंगे? सेम 200 इंच। अपन क्या चेंज करें? विड्थ चेंज कर दें। ऑफसेट एज ए हाउ मच? 200। अब चेक कीजिए 3D वे में, परफेक्ट। अब कंड्यूट, अब ये केबल ट्रे भी तो हवा में नहीं रहेगा और डायरेक्ट जमीन पे भी नहीं रख सकते, तो क्या करेंगे? प्लिंथ। सिंपल। ऑलरेडी प्लिंथ अपन बनाए थे, create similar। okay, then what we'll do, we'll change the size। पहले प्लेस तो कर लेते हैं। क्या हुआ इनको? साइज कितना रखेंगे अपन? सपोज 200 by 200 width, height as a taken as a 100। increase the length as a suppose 300। करेक्ट है। width is 200, परफेक्ट। अब इसकी हाइट के लिए अपन को सेक्शन चेक करना होगा। डी आई
150 mm। इससे भी हाइट कितना देंगे? 150 mm। अब इसी को क्या करेंगे अपन? कॉपी कर लेंगे। सेलेक्ट इट, कॉपी, मल्टीपल फ्रॉम, कर सकते हैं ये? अच्छा। जी नहीं, वैसा उतना खर्च क्यों करेंगे? कंपनी बर्बाद हो जाएगा फिर वैसा। ठीक है, तो छोटे छोटे बिठाएंगे उसमें इस तरह आपका। इज इट ओके? तो दिस वाज अ टोटल योर इलेक्ट्रिकल। आसान है। हाँ, शर्त ये है कि प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, तो विद दिस माई पार्ट इज ओवर। माई पार्ट मतलब मैं ही यहाँ तक हूँ फिलहाल। रहता तो शायद आगे तक पढ़ा लेता आपको। सो आई विल स्टॉप हियर, ओके, एंड remaining classes will be your from Monday, but timing will be 2 to 4। थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए, सिर्फ एक हफ्ता और। ओके, from Monday you will having class 2 to 4, and the class will be taken by your another faculty, Wasim sir। Okay, the remaining topics is your what? Coordination, navis work, okay, dynamo और print layout। तो ये जो दो तीन टॉपिक्स है वो आपको वो कवर कर लेते हैं 1 वीक में इंशाल्लाह। ठीक है ना? स्टिल मैं सबको बोल रहा हूँ, स्टिल इफ यू हैविंग द डाउट्स यू कैन मैसेज मी। ठीक है, अगर डाउट्स रहा तो एक बार मुझे मैसेज कीजिएगा, तो मैं कुछ देखता हूँ क्या है। ठीक है ना? तो आपका मेरा साथ यहीं तक था। ओके, एंड इंशाल्लाह अगर जिंदगी वफा करी तो फिर मिलेंगे कभी। ओके, इंशाल्लाह मिलेंगे जरूर। ठीक है ना? तो विल स्टॉप हियर टुडे एंड विल कंटिन्यू। मतलब दूसरे फैकल्टी आपको मंडे से क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर टू ऑल ऑफ यू एंड डू द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट कीजिए। प्रोजेक्ट में कोई डाउट्स आया तो मैसेज कीजिए। जरूरी नहीं कि मैं मैसेज का जवाब उसी वक्त दूंगा, थोड़ी देर से भी देख सकता हूँ या रात में भी, कभी फजर के वक्त में दूंगा। ठीक है ना? कॉल करेंगे तो रिसीव कर ले तो ठीक है, नहीं तो मैं कॉल बैक जरूर करूंगा आपको। ठीक है ना? Okay. हाँ हाँ, बिल्कुल सबका, एवरीथिंग। आप HVAC में वर्क कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल, सबके व्यू की आपको निकालनी पड़ेंगे एज सेम वे। ठीक है ना? तो गुड बाय एंड लव हाफिज।